So good morning, everyone. So I once again am very proud, and it is pleasure for me to be here, the part of this workshop for the school teachers. And I also thank Millennium India Education Foundation and the other organizers in NCSTC Division of Science and Technology, and the Director of Schools and Basic Shiksha Adhikari, Gautam Budh Nagar, for organizing this workshop. And this is the second day of the workshop, so we had already met yesterday. और हम सब को हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कल हमने जाना था, वापस रिफ्रेश किया था अपने को कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को लेके. हम सब जानते हैं कि साइंस के एक्सपेरिमेंट कितने इम्पोर्टेंट है फॉर एनी साइंस स्टूडेंट, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ने से कोई बात नहीं बनती है. हमको वो प्रैक्टिकली जब तक हम करके ना देखें, हमें यकीन नहीं होता है उस चीज के ऊपर. तो हमें एक प्रूफ चाहिए होता है जो हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा करते हैं. तो आज मैं कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ. तो कल जैसे कि हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था. सो लेट मी अलाउ टू शेयर माय स्क्रीन. You have allowed it, ma'am. Yeah, thank you so much, sir. I think it is visible now. Yes, it is visible. So कल हमने रेस्पिरेशन की बात करी थी और हमने जाना था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन. Is respiration only the breathing mechanism? How do animals, different type of animals, breathe in and breathe out? Okay, how do plants breathe in and breathe out? And we had also studied many experiments, very simple experiments, which we can demonstrate in the class, which a child can perform himself or herself to show, to prove that all living organisms are respiring. Okay, they need oxygen for the burning of the food to produce energy. Okay, and in return they give out carbon dioxide. Okay, now the same thing I'm going to elaborate further. That is, how do plant exchange gases? Okay, like in animals, हमने देखा cockroaches have a different mechanism for breathing in and breathing out. It respires from its skin. It does not contain lungs. Okay, similarly हमको पता है कि plants के system बहुत different है. उसमें भी organs human organs की तरह differentiated नहीं है. उसमें different तरह के organs है, external organs है. So how do plants exchange gases? That we are going to talk about today. So most often we say that plant respire or breathe in or breathe out or exhale or inhale gases through their leaf surfaces. Okay, so this is a leaf of a plant, and a simple diagram to show you that it takes in carbon dioxide, release oxygen. This is not respiration. This we call as photosynthesis. So photosynthesis is basically the reverse of respiration, you can say, because in respiration oxygen goes in and carbon dioxide comes out. Okay, now if you observe this image, it is somewhat एक दिमाग में एक ऐसी सी पिक्चर्स बनती है कि जब लाइट होती है तब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं और जब लाइट नहीं होती तब प्लांट रेस्पायर करते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस चीज को बताएंगे कि ऐसा नहीं है. ये सही है कि प्लांट फोटोसिंथेसाइज लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डे. Okay, different tissue of the plant respire differently. Even leaves which carry out photosynthesis, they also perform the process of respiration throughout the day. Light की presence में भी respiration होता है, क्योंकि respiration is not light dependent. तो day और night दोनों टाइम पे respiration होता है. सिर्फ इतना फर्क होता है कि दिन के टाइम पे क्योंकि photosynthesis हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो plant can use the same oxygen for the process of respiration. Okay, so this is something we should make a child clear about it, क्योंकि
कई बार, मतलब मेरे को बड़ा धक्का लगा जब कॉलेज का बच्चा भी आके बोल रहा है कि रेस्पिरेशन तो मैडम पौधे रात को करते हैं ना। ऐसा नहीं है, रात को वो ऑक्सीजन ज्यादा बाहर निकालते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है और वो यूज नहीं हो पा रहा है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम पे नहीं निकल रहा है क्योंकि वो यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, तो अब प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? तो दे हैव माइन्यूट पोर्स ऑन देयर सरफेस, okay, through which the exchange of gases takes place. And these pores are they are called as stomata. The singular of stomata is stoma. So this is one stoma. You can see these are the epidermal cells of the leaf, and they have pores on the surface, which are called stoma, and they connect it to the internal region of the plant leaf. Okay, लेकिन ये स्टडी करने के लिए, to study these stomata on the surface of leaf, you cannot see with your naked eye. You require good quality lenses. In fact, you require a combination of lens, which we call as a microscope. Okay, I hope हम सब स्कूल में बच्चों को माइक्रोस्कोप तो दिखाते हैं. आई रिक्वेस्ट कि उनको थोड़ा सा यूज भी करने दे माइक्रोस्कोप, क्योंकि जब आप बच्चा यूज करेगा तभी उसको पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोर्स फोकस, फाइन फोकस, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, मिरर. Every part of a microscope has a specific function. Okay, so you can see these minute structures, that is the stomata, only under the microscope. And for that also you need to prepare a slide. Okay, so two things are very important for a biology student, or one is preparation of the slide, and number two, the use of the microscope. So I'll be talking about preparation of slide as well, because I have seen your syllabus and we have to talk about how to make a leaf peel mount. Okay, but before that मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम में हम सब ने घर से ही क्लासेस लिए हैं, देवर ऑनलाइन क्लासेस. वी नो दैट देयर आर बोथ प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा है तो पूरा क्लास खराब हो जाता है कई बार अच्छी बातें क्या है ऑनलाइन क्लासेस की, कि आप बच्चों को इतना वीडियो एक्सपोजर दे सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट नॉलेज का भरमार है. ठीक है, एंड वी आर द फैसिलिटेटर्स, so we can provide them so many good examples, videos to explain the minutest detail of every organism. Okay, अब लेकिन माइक्रोस्कोप का काम हम कैसे घर पे कर सकते हैं? ठीक है, माइक्रोस्कोप तो हमारे लैब में ही होता है और ये कोई बहुत सस्ती चीज भी नहीं है कि हम अपने घर में रख सके या हर बच्चे को कह दे कि आप माइक्रोस्कोप रखो अपने पास. एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. तो इसका जो सॉल्यूशन एक है, वो कल मोनिका मैम ने आप सबको बताया था, दैट इज द फोल्ड स्कोप. Okay, so I hope she has already talked about fold scope, so I'm not going to talk about it. But हाँ, अगर ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होती है तो हम ये एक ऑरिगेमी से बना हुआ माइक्रोस्कोप है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और इसका मैग्निफिकेशन काफी अच्छा होता है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगेन, पर इसमें ऐसा लेंस लग सकता है कि मैग्निफिकेशन कैन गो अप इजीली अप टू 40x. सो आप आराम से कोई भी मैग्नीफाई करके आप इसमें देख सकते हो. तो स्टोमेटा तो हमको लीफ का पील माउंट आराम से, when you can see organisms in a water droplet, you can even see the leaf peel mound and the stomata present on the surface of leaf. Okay, so first experiment that I'm talking is how to prepare a leaf peel mount. Okay, so you have to prepare a temporary peel mount. अब लीफ पील बनाना थोड़ा सा टीडियस जॉब है, लेकिन सबसे आसान एक्सरसाइज इफ यू वांट स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस, कि सबसे पहले अपने हाथ से कुछ प्रैक्टिस करके देख लो कि लीफ पील कैसे निकालना. देन यू कैन टेक द लीफ बेसिस ऑफ अनियन. अनियन बल्ब होता है जो आप जिस पार्ट को आप खाते हो, दे आर एक्चुअली द लीफ बेसिस, और उसके ऊपर एक पतली सी व्हाइट कलर की झल्ली, बहुत जब हम प्याज काटते हैं तभी बाहर निकल जाती है. सो इफ यू ऑब्जर्व दैट transparent piece, or basic more or less it is more of translucent kind, आप उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तब आपको इस तरह के सेल्स नजर आएंगे. So you, from this simple slide, you can
tell a student the structure of a plant cell and how is it different from the animal cell. Okay, so I hope the even in lower primary classes, they perform this exercise to make a peel mount of onion and also to make animal cells mount by taking the extract from their mouth region. Okay, so the basic difference between plant cell and animal cell is the cell wall. Okay, if you observe this slide, you can easily see that distinct cell walls are present. So I'll confirm that this is a plant cell slide. Okay, this is the peel of a plant material. Okay, and you can see distinct red dots present here, which are the nuclei. Okay, but how can you see them? You are able to see them because you have stained them. Okay, जब तक आप उसे स्टेन नहीं करोगे आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से नजर नहीं आएगा. So there are different kinds of stains available. The most common stain available is saffronine. It is a universal stain most of the cell structure. order मेरे कार्ड से और क्या Therefore, you can use this. तो ये वांग में तो 60 हां You can use this stain to make a preparation. This diagram shows you how to make the peel mount. So these are the onion. Just simply take the leaf peel, the base peel. That is easily, आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, peel ऊपर से ही निकल जाती है. जैसे ही आप onion को छीलोगे, आपको हर layer के बीच में एक leaf peel मिल जाता है, leaf base peel, and just mount it on the slide, put a drop of stain onto it. If there is an excess stain, make sure you wash it. पूरा slide red नहीं होना चाहिए. You wash it, put in cover slip very gently so that there are no air bubbles on it, and then your slide is ready, and this is what you observe under the microscope. Okay. Similarly, we can prepare the peel of stomata. Okay. So how do you prepare a leaf peel? For preparing this leaf peel, you have to take any leaf you can take, and in leaf you know that आप उसके अपर सरफेस का पील भी निकाल सकते हो, उसके लोअर सरफेस का पील भी निकाल सकते हो. तो आपने क्या करना है कि आपने लीफ पकड़ा है और उसको झटके से बीच में से फाड़ देना है, लाइक दिस. तो जैसे आपने कुछ नहीं करना, लीफ को फाड़ना है बस झटके से. आप जितना झटके से फाड़ोगे, जितना जर्क के साथ फाड़ोगे, आपको ये रीजन निकल के आ जाएगा. The epidermal surface, the leaf peel will come out. ओके एक डायरेक्शन में फाड़ोगे तो अपर पील निकल के आ जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में फाड़ोगे तो लोअर पील निकल के आ जाएगा. सो दिस इज अगेन अ सिंपल एक्सरसाइज, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. कि आपने अगर बहुत प्यार से फाड़ रहे हो, बहुत धीरे फाड़ रहे हो, तो पील निकल के नहीं आएगा. जितना आप जोर से उसे झटका दोगे उतना ज्यादा अच्छा पील निकल कर आता है. सो दिस रीजन इज द पील. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड, कट द पील, put it on the glass slide, stain it, wash the excess stain, put the mountant. Normally we take glycerin as a mountant, and put a cover slip to observe it under the microscope. So this image shows you the various kind of stomata which you can see on the leaf peel. Okay, you can see the opening in the stomata. These are the open stomata. ये जो राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ इमेज है, इसमें आपको बीच में एक होल नजर आ रहा है. These are the open stomata. Okay, and these बाकी सब में आप देखो तो आपको ओपनिंग नहीं नजर आ रही है. दोनों गार्ड सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, दो सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं. So you don't see an opening there. Okay, so these are the open stomata and these are the closed stomata. Okay, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी स्लाइड बनाते हैं, आपके स्टोमेटा ज्यादातर क्लोज हो जाते हैं. रीजन क्या है उसके पीछे? बिकॉज जो हम स्टेन यूज कर रहे हैं वो एक नॉन वाइटल स्टेन है. ठीक है, तो अगर हमने मटेरियल को फिक्स नहीं किया है, तो अगर हमने ओपन स्टोमेटा की स्टेज में फिक्स किया हुआ है मटेरियल, तो स्टोमेटा ओपन ही रहेंगे. लेकिन अगर हमने फिक्स नहीं करा है, तो धीरे धीरे वो स्टोमेटा दे विल लूज वाटर एंड दे विल क्लोज. ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ज्यादातर स्लाइड्स में क्लोज स्टोमेटा दिखते हैं.
If you want to observe opening and closing of the stomata, अगर आपको प्रोसेस देखना है कि स्टोमेटा ओपन हुआ है या क्लोज है, तब आप उस स्लाइड को स्टेन मत करिए, ठीक है? You can observe a slide without staining if you want to see opening and closing of stomata. आप माउंट करिए उसको, पानी में माउंट कर लीजिए तो आपको ओपन दिखेंगे, ठीक है? तो यू कैन सी दैट, बट आप उसको स्टेन में करेंगे तो फिर वो क्लोज ही, ज्यादातर क्लोज हो जाएंगे. फिर यू कैन शो स्टूडेंट्स, यू कैन मेक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ इट, ठीक है? हर बच्चे को बोल दिया कि बाहर गार्डन में जाओ और एक लीफ ले आओ अपनी चॉइस की, ठीक है? कोई भी लीफ ले आओ. दे हैव टू प्रिपेयर द लीफ पील, और उस लीफ पील में उन्हें स्टोमेटा देखने हैं. Then you can see a variety of stomata on the leaf surfaces. Even not only the stomata, सबसे पहले आप बच्चे को एपिडर्मल सेल्स दिखाइए. हर पील में, हर अगर प्लांट अलग अलग है तो ज्यादातर सेल्स भी डिफरेंट साइज और शेप के होंगे. सेल्स का शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, उसकी आउटलाइन बाउंड्री अलग हो सकती है, ठीक है? तो डिफरेंट काइंड ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट. तो दिस जो आपने लीफ पील बनाया है, बेसिकली वो एपिडर्मल सेल का पील बनाया है. उसके अंदर जो पोर्स दिख रहे हैं, दोज आर द स्टोमा. स्टोमा के आसपास दो सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. वो ओपनिंग को गार्ड करते हैं, इसलिए उनका नाम है गार्ड सेल्स, ठीक है? नाउ द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स मे ऑल्सो वेरी. मोस्ट ऑफन यू विल फाइंड, अगर वो कोई डाइकॉट लीफ लेकर आते हैं बच्चे, तो द शेप विल बी किडनी शेप और बीन शेप्ड, ठीक है? राजमा की तरह शेप होगा ज्यादातर का. बट अगर वो किसी ग्रास का स्टोमेटा लेकर आते हैं, ठीक है, ग्रास की स्पीसीज लिया है, उसका पील निकाला, तो स्टोमेटा विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप. दीज आर कॉल्ड एज डम्बेल शेप स्टोमेटा, okay, or bone shaped, dumbbell shape or bone shape. So in guard cells ka, the lower image, green one, and the upper image, you can see the shape of stomata is highly variable. That can be a distinctive feature of identification of a species on the basis of the type of stomata. ठीक है? अब गार्ड सेल के अलावा जो आपको सबसे ये जो एपिडर्मल सेल्स दिख रहे हैं, इन सारी इमेजेस में आप देखिए एपिडर्मल सेल्स, मेन एपिडर्मल सेल्स जो है काफी डिफरेंट हैं. जो गार्ड सेल के आसपास एपिडर्मल सेल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है? आप आराम से बता सकते हो कि ये लुक एट दी अपर लेफ्ट इमेज, दो गार्ड सेल्स आपको दिख रहे हैं. इट इज अ क्लोज्ड स्टोमा, पोर नहीं दिख रहा है, बट आपको उसके आसपास के जो एपिडर्मल सेल्स हैं, दो एपिडर्मल सेल्स बहुत डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, बाकी सारे नॉर्मल दिख रहे हैं. सो दीज डिस्टिंक्ट एपिडर्मल सेल्स which surround the guard cells are called as subsidiary cells. Okay, subsidiary cells बहुत important होते हैं. They connected to rest of the cells, but opening of closing of stomata, स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब उसमें पानी अंदर जाएगा, कब बाहर आएगा, वो इस सब्सिडरी सेल की कंसंट्रेशन पे बहुत डिपेंड करेगा. इसके सेल सैप की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. ओके, सो दिस इज अ जनरल इमेज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोमेटा जो आप सिंपल लीफ पील बना के देख सकते हैं. तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है. जितनी ज्यादा लीव्स होंगी उतने तरह तरह के स्टोमेटा आप बच्चों को दिखा सकते हैं. तो आप फिक्स मत कीजिए कि हम ये चांदनी की लीफ पे ही दिखाएंगे या हिबिस्कस की लीफ पे ही दिखाएंगे. लेट स्टूडेंट्स एक्सप्लोर. किसी किसी का पील निकालना इजी होगा, किसी का मुश्किल होगा, बट अल्टीमेटली विद प्रैक्टिस सारी लीफ की पील निकल के आ जाती है. एक बहुत सिंपल मेथड और है. अगर मान लीजिए कोई लीफ ऐसी है जिसका पील नहीं निकल रहा है, होता है कई बार कि एपिडर्मल सेल्स बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं उसके साथ, और लीफ ऐसी है कि फाड़ने के ऊपर भी उसका वो लीफ फट जाती है पर पील नहीं निकलता है. देयर इज एन इजी वे फॉर शोइंग स्टूडेंट्स अ स्टोमेटा. इसमें क्या करते हैं हम, जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश पता होगा आप सबको, नेल पॉलिश होती है जैसे बेस कोट या अपर कोट होता है जो ट्रांसपेरेंट होती है. आप लीफ के सरफेस पे यू पुट अ कोट ऑफ दिस नेल पॉलिश एंड लेट इट ड्राई.
ठीक है, अब वो ड्राई होने के बाद देन यू टेक आउट द पील। अब एपिडर्मल पील आए ना आए, नेल पॉलिश का कोट अलग हो जाता है, ठीक है। और नेल पॉलिश के कोट को फिर यू कैन पुट ऑन योर स्लाइड, पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको स्टोमेटा नहीं आएंगे उसमें, लेकिन स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स का इंप्रेशन आ सकता है उसमें। तो अगर आपको सिर्फ काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा या दिखाने हैं स्टोमेटा कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो यू कैन यूज दिस मेथड अगर पील नहीं निकल रहा है बच्चों से, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, बस सिंपल नेल पॉलिश का कोट लगाया और उसके ऊपर आपको स्टोमेटा के इंप्रेशंस आ जाते हैं, क्योंकि ये उभरे हुए सेल्स होते हैं थोड़े, ठीक, या फिर ये थोड़े गहरे सेल्स होते हैं। स्टोमेटा आर आइदर संकन या फिर सरफेस से, मतलब एपिडर्मल सेल से थोड़े डिस्टिंक्ट होते हैं, तो इनका इंप्रेशन आ जाता है कोट के ऊपर, इसके नेल पॉलिश कोट के ऊपर, तो आप उससे स्टोमेटा का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हमें स्टोमेटा को काउंट करना है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि इस प्लांट लीफ में स्टोमेटा कहाँ पर है और कितने हैं। उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है लीफ की, कि वो कितना ट्रांसपिरेशन कर सकता है, कितना वाटर लॉस कर सकता है, कितना रिस्पायर कर सकता है, कितना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो बिकॉज द रोल ऑफ स्टोमेटा इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल स्टोमेटा को असाइंड है। तो जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज्यादा ये काम होगा, ठीक है। तो I have told you a simple method to take out leaf peel, and if you cannot find out the leaf peel, you can simply put a nail polish coat and see that stomata are present. You can locate the position. Okay, a position locate करने का क्या फायदा है कि आपको पता चल जाएगा whether the stomata is hypostomatic, amphistomatic or epistomatic. Hypo नीचे की तरफ, that is stomata are present on the lower surface of the leaf, सिर्फ नीचे की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं होते। Amphistomatic, stomata are equally distributed on the both the surfaces, upper surface और abaxial surface और adaxial surface, दोनों पे स्टोमेटा होंगे। और एपिस्टोमेटिक मतलब सिर्फ ऊपर के सरफेस पे हो गए। तो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि किस कंडीशन में और क्यों स्टोमेटा हाइपोस्टोमेटिक होंगे? Any one of you? To reduce the rate of transpiration. और किस तरह के प्लांट्स में होंगे मैम? Tropical. Xerophytes. No, not the xerophytes. Terrestrial. And an aquatic, maybe. Not aquatic. Aquatic में epistomatic. Exactly. It is Aquatic cactus. कैक्टस, यू कैन से कैक्टस में तो लीव्स ही रिड्यूस्ड होती हैं, वहां पे तो पील आपकी निकल ही नहीं पाएगी, पाइन स्पाइन होता है। लेकिन ऐसे प्लांट जहां पे ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना हो, ठीक है, जैसे ज्यादातर अगर आप मेसोफाइट भी देखें, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरोफाइट्स राइट नाउ, अगर आप मेसोफाइट भी देखें तो मेसोफाइट में भी अपर सरफेस की पील पे कम स्टोमेटा होते हैं और लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। You can even call such species as hypostomatic, क्योंकि लोअर सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं और अपर में कम होते हैं। So as you said rightly ma'am that it is a mechanism to reduce transpiration. Now the role of stomata is very important. दोनों काम है, इसको transpiration करना भी है, okay, and in transpiration we know almost 90% of water is lost. जिसको जितना absorb कर रहा है प्लांट उसका काफी हिस्सा वो लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो प्लांट्स विल सफर अ वाटर स्ट्रेस, इसलिए ट्रांसपिरेशन होना भी जरूरी है, बट एक कंट्रोल वे में होना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादातर जो मेसोफाइट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं और बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, भरपूर स्टोमेटा होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो स्टोमेटा ज्यादातर लोअर सरफेस पे होते हैं ताकि वो एक्सपोज्ड भी रहे लेकिन ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है। उतना अगर ये सारे के सारे स्टोमेटा अपर सरफेस पे बहुत सारे होते तो वाटर लॉस और इजी हो जाता, जहां पे लाइट पड़ रही है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। सो
ऊपर होंगे डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। आप एक कपड़ा सुखाते हैं रस्सी पे, ठीक है, जो धूप की साइड है वो हिस्सा जल्दी सूख जाता है और पीछे की साइड थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, आपको पलटना पड़ता है कई बार कपड़ा पूरा सुखाने के लिए। तो ये सिंपल उसी तरह से है। तो स्टोमेटा बहुत सारी लीव्स में, आई विल नॉट जीरोफाइट्स की अगर आप लीव देखें तो डेफिनेटली मोर स्टोमेटा, हो सकता है अपर सरफेस में जीरोफाइट में स्टोमेटा ना ही हो, बट इवन इन मेनी ऑफ द मेसोफिटिक स्पीसीज यू विल फाइंड दैट अपर सरफेस हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा एंड लोअर सरफेस हैव मोर स्टोमेटा। और सारे मेसोफाइट नहीं, जिन मेसोफाइट में यू कैन सी ए डॉर्सो वेंट्रल लीफ सरफेस, मतलब लीफ हॉरिजॉन्टली अरेंज होगा अगर, ठीक है, तो एक अपर सरफेस होगा, एक लोअर सरफेस होगा। तो अपर सरफेस पे ज्यादा लाइट पड़ रही है, ज्यादा धूप पड़ रही है, लोअर सरफेस पे कम पड़ रही है, तो इसमें इस केस में हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा होना ज्यादा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि नीचे उतनी धूप नहीं पड़ रही है तो फिर नीचे स्टोमेटा ज्यादा होंगे। सो एक आइसोबायलेटरल लीफ होगा तो उसमें हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होगा। But at the same time, if you see, I think I missed that picture. No, I missed one picture. You can imagine maze को imagine कर लो, या किसी भी आप ग्रास स्पीसीज को ऊर्जा दो ऊर्जा से मिलकर बनी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो जो लीफ है आपकी, कहते हैं वस्तुओं लीफ ग्रास की लीफ सौरभ जी आप म्यूट कर देंगे ने, परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। खींची हुई रबड़, गुलेल, खींचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी। थैंक यू सो मच सर। ओके, या श्योर। सो हम बता रहे थे कि जैसे आप कोई घास की पत्ती देख लो, या फिर आप मेज कॉमन है, वीट, इनकी पत्तियां सीधी खड़ी खड़ी होती है, लंबी होती हैं और काफी हद तक सीधी ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो लीव्स हैं जिसमें वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस सेम है, डॉर्सी वेंट्रल नहीं है, दोनों सेम है, आइसोबायलेटरल लीव्स हैं, ऐसी कंडीशन में जो लीव सीधी है वहां पे धूप दोनों साइड से पड़ रही है। लीफ सीधी खड़ी है तो इधर से भी पड़ रही है और इधर से भी धूप पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटा किसी भी साइड हो ट्रांसपिरेशन बराबर होगा। सो सच लीव्स आर एम्फीस्टोमेटिक, ठीक है। दोनों तरफ स्टोमेटा बराबर कब होंगे, जब दोनों तरफ लाइट बराबर होगी, दोनों तरफ ट्रांसपिरेशन बराबर हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लीफ को, वो बचा नहीं पा रही है, अपने वाटर कंजर्व नहीं कर पा रही है, तो दोनों तरफ स्टोमेटा बराबर होंगे, दैट इज एम्फीस्टोमेटिक। Third one is epistomatic. As you correctly mentioned that aquatic plant में epistomatic है, सारे aquatic plant में नहीं, हम सिर्फ floating hydrophytes की बात कर रहे हैं, जिसका जैसे आप ये लोटस का लीफ देख रहे हो, इसका लोअर सरफेस पानी में पूरा डूबा हुआ है, अपर सरफेस एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो दो कारण है इसके बहुत क्लियर, अपर सरफेस एक्सपोज है, स्टोमेटा वहां पे बहुत इजीली अवेलेबल होंगी। नंबर 2, जो इतना पानी है इसके पास कि आराम से पानी ले सकता है, इसको कभी पानी का स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो वाटर स्ट्रेस, तो जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है इट कैन इवेपोरेट दैट वाटर, जितना भी ट्रांसपिरेशन हो जाए होता रहे, तो दैट इज व्हाई द स्टोमेटा आर मेजरली प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, ओके। This is what you were saying, cactus. Okay. Now, cactus is a xerophytic plant. Xerophytic plant में बहुत सारे modifications होते हैं, उसको पानी की कमी है डेजर्ट में, उनको पानी बचाना है, कैसे भी करके बचाना है। तो जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स अगर आप देखो तो ट्रॉपिकल प्लांट्स में लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, फॉरेस्ट लीव्स देख लो, दे आर गुड एक्सपैंडेड लीफ, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा स्टोमेटा होंगे, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट की लीव्स बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल है। जहाँ पे पानी कम होता है, जैसे आप कोनिफेरस फॉरेस्ट को ही देख लो, वहां पे अगेन जीरोफिटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि पानी की कमी है, आप प्लांट को पानी बचाना है। तो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन विच इज वेरी एविडेंट इज द लीव्स आर रिड्यूस्ड। आप एक पाइन ट्री भी देखो
It belongs to a coniferous mountainous region, और वहां भी पानी, क्योंकि पानी की काफी कमी हो जाती है, तो वहां भी लीव्स नीडल लाइक होती हैं. पाइन की लीफ, ओरोकेरिया की लीफ, कोई भी आप माउंटेनियस प्लांट की लीफ देख लो, पतली पतली होती चली जाएगी. सिमिलरली डेजर्ट प्लांट, कैक्टस देख लो, इतना कांटों से भरा होता है. नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन, बट ऑल द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. बट एट द सेम टाइम उसको खाना तो बनाना ही है. It has to perform the process of photosynthesis. So the work of this photosynthesis is now taken over by the stem. So in these plants you can see that stem will be green in color. अगर जितने ज्यादा spines होंगे, अगर वो बिल्कुल भी green नहीं है, needle like leaves की तरह नहीं है, तो पूरा stem ही green हो जाएगा to carry out the process of photosynthesis. So stem के ऊपर stomata बहुत कम होते हैं as compared to the leaf surface. So this is a mechanism to reduce transpiration. There are multiple other mechanisms in xerophytic plants to reduce transpiration. The image here shows you sunken stomata. ये epidermal cell है, ठीक है? और if you see the position of the stomata, वो epidermal cell से काफी नीचे है. So this is called as sunken stomata. तो जितना नीचे stomata होगा, उससे क्या होगा, जब ये water vapors evaporate होंगे, they form a vapor pressure here. यहाँ पे vapors इकट्ठे हो जाते हैं. अब बाहर के environment में अगर temperature ज्यादा है, ठीक है, तो वो इसको evaporate करेगा, यहाँ पे evaporate कर, जितना नीचे जाता रहेगा temperature कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे vapor accumulated है. तो वेपर के एक्यूमुलेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन कम होगा. जब यहाँ से वेपर ही नहीं हट रहे, तो अगले वेपर्स एवापोरेट नहीं हो पाएंगे. So that is why sunken stomata helps in conserving water, helps in to reduce transpiration. And all those xerophytes जिसमें leaves होती हैं, उनकी leaves पे sunken stomata होंगे. If you check the stomata on the stem of the xerophyte, stem also contains stomata. If you check the stem, the stem will also contain sunken stomata. Like casuarina का अगर आप stem देखो, तो गहरी गहरी cavities होती है, और cavities के अंदर stomata होता है. Similarly, ये नेरियम का leaf है. नेरियम, you must have seen this plant, pink कनेर कहते हैं इसको, जो नॉर्मली रोड साइड पे बहुत कॉमन प्लांट है. तो पानी की कमी इसको भी बहुत होती है, तो बट इट कैन सर्वाइव इन लो वाटर कंडीशन. एंड आप देखिए, एक तो लोअर सरफेस पे, नॉट ऑन द अपर, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस. लोअर लीफ रीजन में दे हैव लार्ज कैविटीज प्रेजेंट. इन कैविटी के अंदर आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, दीज आर द स्टोमेटा. Okay, so एक तो and these stomata are again sunken stomata. तो एक तो sunken stomata है, वो भी और गहरे गड्ढे में चला गया कैविटी के अंदर, ठीक है. तो इस कैविटी के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा भी sunken है. तो बाहर के मुकाबले टेम्परेचर कितना भी बढ़े, डेफिनेटली इस कैविटी में टेम्परेचर कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा. There is one more very important feature in this leaf, that is, you see some hairs coming out. Okay, so this cavity, the cavity in the nerium, it contains too many hair. Okay, आप लोग नहाकर आते हैं तो सबसे पहले मतलब बाल आप सबसे पहले सुखाना शुरू करते हैं, पर बॉडी बाद में पहले सूख जाती है, बाल सबसे बाद में सूखते हैं, है ना, कॉमन है, क्योंकि ये they can retain moisture. So similarly, these hairs can retain lot of moisture. अगर evaporate होकर आ रहा है stomata से कुछ पानी, water vapors, so they get accumulated, they get trapped in these hairs. And this is a beautiful mechanism to conserve water. अगर यहाँ पे ही water vapor gradient नहीं बन पा रहा है, water vapor बहुत ज्यादा है, यहाँ पे gradient नहीं बन पा रहा है, तो transpiration नहीं होगा. Transpiration is simply this loss of water or in the form of vapors from high pressure gradient to low pressure gradient, high pressure to low pressure. So there has to be a water pressure gradient maintained.
तो अगर यहाँ पे वाटर प्रेशर ज्यादा ही है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल अडेप्टेशन बाय द जीरोफिटिक प्लांट्स टू कंजर्व वाटर. सो बेसिकली वी नो दैट स्टोमेटा का एक फंक्शन तो हमें बहुत क्लियर है कि ट्रांसपिरेशन उसको करना है, लेकिन ये प्लांट को अडेप्ट करना है कि ट्रांसपिरेशन उसको कितना करना है. Okay, so I am here talking about the structure of the stomata. Okay, तो आप लोग जब लीफ पील बनाएंगे तो आपको structure of stomata should be very clear to each and every student. This opening, this complete structure is not a stomata. Okay, ये बहुत this should be clear that this complete structure is not stomata. Only this pore opening is the stoma. जो opening है वो stoma है, and it is guarded by two cells. They can be kidney shape or they can be bone shape. These are called as guard cells. Okay, guard cells are rich in chloroplast. They can photosynthesize. So epidermal cells normally photosynthesis के लिए नहीं होते हैं. Epidermal cells का function होता है protection. It forms the upper covering, dermis cell. It will cover, it will protect the inner cells. Okay, but stomata they contain chloroplast. और इन chloroplast का बहुत important function होता है, क्योंकि when there are chloroplast, वो they can carry out the process of photosynthesis. When photosynthesis is taking place, that means they are making sugars. ठीक है, वो खाना बना रहा है. When they are making sugar, that means the osmotic concentration of the cell that will differ. Okay, their osmotic pressure will reduce. क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है शुगर की वजह से. जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल्स के मुकाबले कम हो जाता है, this cell, so water will move from the surrounding cells which are called as subsidiary cells or the epidermal cells. Water will move from the surrounding cells to the guard cells. Okay, and when water moves from subsidiary cells to the guard cells, इस process को हम कहते हैं opening of stomata. क्यों? क्योंकि observe this guard cell again. The guard cells have this, these are the plant cells, so they have cell wall present. And if you see the cell wall is thickened on the internal side. अंदर की तरफ cell wall thick है. Okay, dorsal wall is very thick as compared to the ventral wall. Okay, because of this uneven thickening है, ये मोटी है, ये पतली है, तो जब स्टोमेटा के अंदर पानी जाता है वो स्वेल करते हैं. सेल वॉल नॉर्मली रिजिड होती है, वो ज्यादा मूव नहीं करती पर थोड़ी बहुत कर सकती है. तो जितना ये सेल वॉल जहां पर जितना ज्यादा मोटा है वहां पर कम मूव करेगा प्रोटोप्लाज्म, और जहां पे पतली है वहां पे ज्यादा स्वेल हो पाएगा. ओके, so there is more swelling on the ventral side as compared to the dorsal side. उसकी वजह से the stomata gets bend. ये झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, and because of the bending of stomata, the stoma opens, the pore opens. So this is the mechanism of opening of the stomata. कैसे खुल रहा है stomata? ऐसा नहीं कि एयर आ रही है तो अपने आप वो खुल जाएगा. उसको खोलने के लिए बहुत important process है, that is osmosis. Okay, osmosis is the movement of water from its higher concentration to the lower concentration across a semi-permeable membrane. तो वो दो cells कौन से हैं जिसमें high concentration of water और low concentration of water होगा? वो subsidiary cells हैं या epidermal cells हैं और guard cells हैं. So that is why they play a very important role in opening and closing of the stomata. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Fine. So this is how stomata open. और जब इनको close होना होता है, because closing is also important, water को conserve करना है तो stomata को close होना भी जरूरी है. तो closing के time पे नॉर्मली हम कहते हैं स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात को क्लोज होते हैं ज्यादातर प्लांट्स में. तो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर शुगर बन रहा है. शुगर बनने से इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम subsidiary cells to guard cells. At the night time,
क्लोरोप्लास्ट, the photosynthesis is not taking place, sugar level कम होता है, osmotic pressure, osmotic concentration कम होता है. So now the guard cells will lose water. So when they lose water, they come back to their original shape. Okay, वो वापस से flaccid हो जाते हैं, वापस से अपनी शेप पे आ जाते हैं, जो बेंडिंग होती है वो खत्म हो जाती है और ये दोनों सेल्स पास में आ जाते हैं. So that means closing of the pore, closing of the stoma. Okay, so you can again plan a number of experiments. आपने बच्चों को एक बार पील बनाना सिखा दिया, उसके बाद they can plan a number of experiments from it. Number one, they can calculate the stomatal index of different plant species. ठीक है, जैसे उन्होंने कुछ पत्तियां अलग अलग प्लांट की सेलेक्ट करी, कोई मीजोफाइट ले लिया, कोई डाइकॉट ले लिया, कोई मोनोकॉट ले लिया, कोई जीरोफिटिक लीफ ले ली, कोई सक्कुलेंट ले लिया. तो अलग अलग प्लांट का लीफ सेलेक्ट किया और उसका पील बनाया, अपर सरफेस से भी और लोअर सरफेस से भी. तो टू कैलकुलेट स्टोमेटल इंडेक्स, इट इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, तो बेसिकली स्टोमेटा आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. क्यों? एपिडर्मल सेल्स के बीच में गैप हो गया तो पोर बन गया, और उस जो एपिडर्मल सेल्स हैं वही मॉडिफाई होकर गार्ड सेल्स बन जाते हैं. तो अगर हम गार्ड सेल्स को एक स्टोमेटा गिन रहे हैं, एक पोर गिन रहे हैं, तो बाकी उसके आसपास जो है वो एपिडर्मल सेल्स हैं. ठीक है, तो यू कैन काउंट एक लीफ पील के एक एरिया में कितने स्टोमेटा हैं, कितने एपिडर्मल सेल्स हैं, एंड यू कैन कैलकुलेट द स्टोमेटल इंडेक्स. You can tell the difference in the number of stomata in different type of plant, mesophyte, xerophyte, succulent. Compare these plants. Compare a dicot or a monocot plant for their stomatal index. तो आप compare कर सकते हो दो plant species में किस में stomata ज्यादा होंगे. एक तो हो गया कि कहाँ पर हैं, ऊपर है या नीचे हैं. दूसरा हो गया number of stomata, किस में ज्यादा है, किस में कम है. ठीक है, फिर आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो कि हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं जब आपके पास ये प्लांट के अंदर गार्ड सेल्स के अंदर पानी जा रहा है, तो इसका मतलब वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. सो अगेन यू कैन प्लान एन एक्सपेरिमेंट कि आपने 2 पॉट्स ले लिए, एक में पानी डाला रेगुलर, आपने इनिशियली दोनों में बराबर पानी रखा, दोनों सेम हेल्थ के प्लांट है, सेम एज के प्लांट है. एक में आप रेगुलर पानी डालते गए और एक में आपने 3-4 दिन तक पानी नहीं डाला. ठीक है, सो डेफिनेटली जिसमें पानी नहीं डाला दैट विल ड्रूप डाउन. मेक पील माउंट ऑफ बोथ एंड ऑब्जर्व द ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा. दिस इज द सिंपलेस्ट वे दैट हाउ यू कैन स्टडी एन ओपन स्टोमेटा एंड अ क्लोज स्टोमेटा. ठीक है, so this is how an open stomata look like, this is how a closed stomata look like. पोर नहीं दिख रहा है, वॉल थिक है, डॉर्सल वॉल थिक है क्लोज स्टोमेटा में, इसलिए पोर बिल्कुल नहीं दिख रहा है. इसमें आपको लार्ज पोर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके, यू कैन प्लान योर एक्सपेरिमेंट इन अ वे कि आपने एक पॉट लिया, उसको धूप में रख दिया और सेम हेल्थ और एज के प्लांट को आपने अंदर कमरे में रख दिया. You can immediately make the peel, check whether the stomata are open in the light condition or in the dark condition. This you can also perform for different plant species. ठीक है, succulent में क्या है, cam plants में क्या है. Although I understand कि छोटे बच्चों को कैम्प प्लांट्स वगैरह नहीं समझ आएगा, लेकिन एक जनरल बिहेवियर जो स्टोमेटा का है कि हाँ स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर लॉस होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वाटर लॉस नहीं होता है. सो द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा उनको समझ आ जाएगा. बेसिकली you can talk to them about photosynthesis, you can talk to them about respiration, and you can talk to them about transpiration. ठीक है, so I'll continue this in terms of transpiration, क्योंकि अब transpiration बच्चों को ज्यादा आसानी से समझ आएगा.
क्योंकि आपने देख लिया कि जब आपने पौधे में पानी नहीं डाला तो वो लीव्स ड्रूप हो रही हैं, साथ ही साथ यू मेक अ पील माउंट, स्टोमेटा क्लोज आ रहे हैं। तो डेट इज क्लियर कि ट्रांसपिरेशन के टाइम पे स्टोमेटा, अगर आप पानी नहीं दे रहे हो तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है और स्टोमेटा भी क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा क्यों क्लोज हो रहे हैं, दैट यू कैन डिस्कस, ओपन इट फॉर डिस्कशन फॉर द क्लास। ओके, मेन रोल ट्रांसपिरेशन का क्या है? There are few important roles of transpiration. And why is transpiration important? If I'm saying that almost 90% of water is lost during transpiration, then why do plants transpire? Okay, one of the most important, अच्छा आप लोग बताइए मुझे, what are the importance of transpiration? बीच बीच में मेरे को पता होना चाहिए ना, मुझे सुन रही हैं। Ma'am, to maintain the temperature of the plant. Yeah, to maintain the To temperature. release, ma'am, to release excess amount of water from the plant. Excess amount of water. Okay. Air And exchange of air, respiration. Transpiration का function, not for the stomata, ma'am, transpiration का function. Adding water vapor in the atmosphere. Okay, you can say to maintain the water cycle, or It also creates a suction pressure because of which the movement of water and minerals takes up in the upward direction. wonderful, Neerja For ma'am, the thank you. tall trees. Yeah. हाँ, so बहुत ट्रांसपिरेशन लॉस तो है ही वाटर का। ठीक है, अब क्यों हम पानी, अगर हम बोले हम पानी पिए जा रहे हैं, टॉयलेट जाए जा रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो फायदा क्या है? फायदा ये है, प्लांट्स में स्पेशली ट्रांसपिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर रूट्स को पानी एब्जॉर्ब करना है तो ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर। Okay, it creates a negative pressure so that the roots can absorb water. Roots में दो तरह का water absorption होता है। एक होता है active absorption, जहां वो अपनी energy लगाती है, okay, और water को absorb करते हैं। Second process जो absorption है roots में, वो है passive absorption। वहां पे उसकी कोई energy नहीं लग रही है, बस जैसे आप syringe से पानी खींच रहे हो या straw में पानी suck कर रहे हो, सिमिलर मैकेनिज्म है। रूट्स को कुछ नहीं करना पड़ रहा, अब वो बस पानी ऊपर खींचे जा रहा है, तो वो बस कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मेंटेन करने के लिए सॉइल में जितना वाटर है उसको लिया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज पैसिव एब्जॉर्प्शन। एंड दिस पैसिव एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं एंड वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कल पूरा वाटर के ऊपर चैप्टर पढ़ा है मोनिका मैम से। तो नॉट ओनली इन एनवायरनमेंट, प्लांट्स में अगर देखो या ऑर्गेनिजम्स में देखो, हमें पानी की जरूरत क्यों है? हम एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारी ठीक से काम नहीं करती बॉडी, क्योंकि हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो एंजाइम यूज हो रहा है, दैट एंजाइम वर्क्स इन एन एक्वस कंडीशन, उसे पानी की बहुत जरूरत है। ऑल एंजाइम they work in aqueous condition. So if water is not available, enzymes are not going to function properly. If enzymes are not functioning, that the metabolism of the system of the body will be affected. Similar thing happens with plant. Plant may, number one, for the metabolic processes, for the working of enzyme, each and every cell of the plant should receive water. Okay, and that process is called as conduction, which takes place through xylem. Okay, so water is it moves through the xylem, but xylem में कहाँ से आता है? It comes from the xylem of the roots. Roots absorb कर रही हैं पानी, तब वो xylem में आ रहा है। तो ये push नहीं हो रहा है water, ये pull हो रहा है, और pull कौन कर रहा है उसे pull कर रहे हैं stomata. So basically stomata, when they are transpiring, they release water vapors. Okay, at the same time this creates a negative pressure inside. Okay, it creates a suction pressure because all water molecules are connected to each other. They easily form hydrogen bonds and they are connected to each other. Okay, so एक water molecule खींच रहा है तो दूसरा खींच रहा है, फिर तीसरा खींच रहा है, तो the continuous column of water molecules are being pulled up. Stomata, वहां से substomatal cavity में खींचा, substomatal cavity से mesophyll cell में से खींचा, mesophyll cells are connected to your xylem and phloem, तो वास्कुलर बंडल से खींचा, xylem से खींचा, xylem स्टेम से लीफ, xylem
जो लीफ में है उसमें खींचा, वेन्स में खींचा, मिड वेन में खींचा, ब्रांच में खींचा, स्टेम में खींचा और अल्टीमेटली रूट में खींचा। अब रूट में खींच रहा है तो रूट कहाँ से पानी लेगा? रूट सॉइल से पानी लेगा. So this is called as passive absorption of water, which is because of transpiration, and therefore transpiration is really very important process. It provides water to each and every part of the plant. It helps in absorption of water. Okay, and as many of you have mentioned that there are other function of transpiration as well. Number one is homeostasis. So in plants they have to survive in such harsh conditions. तो वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है. तो टेम्परेचर क्या मेंटेन कर रहा है? वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. द ट्रांसपिरेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेशन, सो दैट कॉजेस कूलिंग इन द प्लांट. तो उनका टेम्परेचर लो रखता है वो प्लांट्स में. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर ऑल द प्लांट, ऑल्दो इट इज कॉल्ड एज नेसेसरी एविल. एविल क्यों है? गलत बात क्या है ट्रांसपिरेशन की? ओटेनोलॉजी के भारतीय वैज्ञानिक है इस प्रकार. हेमा जी, हेमा मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कोई और मुझे बताएगा ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी एविल क्यों कहा जाता है? मैम आई थिंक इट इज एबल क्योंकि प्लांट को एब्जॉर्ब भी करना है वाटर, लेकिन ट्रांसपिरेशन की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन निकल भी रहा है उससे, तो नेसेसिटी भी है. वो प्लांट के लिए वाटर नीडेड है, बट वो कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है तो उसके लिए एक बुराई भी है कि उसको निकलना पड़ रहा है बाद में. बिल्कुल मैम, आपने कल जो अटेंड किया, आप लोगों ने वाटर के ऊपर जो सुबह टॉक अटेंड किया, हमारे को पानी की कमी क्यों हो रही है? क्यों सॉइल में इतना पानी चाहिए कि सारे प्लांट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? इंडिया में इरिगेशन इज द मेन प्रॉब्लम. जितना भी बिकॉज फार्मिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, और जितना भी पानी हमें चाहिए, फील्ड्स में हम पानी देते रहते हैं, पर हमें रोज पानी डालना होता है क्योंकि प्लांट्स जितना पानी ले रहे हैं वो बहुत सारा इवेपोरेट भी कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई इट can be called as an evil, but yes, it is very necessary for the growth and the development of the plant, for all the metabolic processes happening in the plant. So this is how water reaches to each and every part of the plant. So to bring it to the level of students, this is the experiment that you may be performing with your student. और मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, हम labs में transpiration के experiment कराते हैं using a photometer. I'll show you the photometer also कि photometer कैसा दिखता है. But because of the pandemic, वो हमने कॉलेज के स्टूडेंट से वापस ये एक्सपेरिमेंट्स कराए क्योंकि घर पे वो यही परफॉर्म कर सकते थे. So this is an image sent by one of my student who has performed this transpiration experiment at home. So this is one of the good experiment कि बच्चा कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, स्कूल में, घर पे, because you do not require much of the equipments for this experiment. You require simply a polythene bag, okay, and a plant, a growing plant. Okay, so you just need to cover, you can either cover the complete plant or you can cover a portion of the plant, leaves of the plant. So basically जो region transpire कर रहा है उस region को आपने cover कर देना है. Make sure you take a transparent polythene. ठीक है, black polythene मत लीजिएगा क्योंकि the plant should be functional. Okay, so light उस तक आनी चाहिए, photosynthesis करना चाहिए, तभी स्टोमेटा open होंगे. ठीक है, so we take a transparent polythene bag and we allow the plant to stand for some time, maybe 1 day or 2 days, and you will see, the students can see the water droplets inside the plant bag. So these water droplets inside are because of the water which has evaporated because of transpiration. Now you can modify this experiment. Students can design their own experiment, or you can tell them how to modify the experiment by testing the various factors affecting transpiration. So the factors that affect transpiration, like light.
ओके, तो लाइट में अगर आपको चेक करना है कि लाइट का इफेक्ट है ट्रांसपिरेशन पे कि नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा ओपन होते हैं, बट इज इट ट्रू, क्या लाइट की प्रेजेंस में ही स्टोमेटा होंगे? तो यू कैन डू दिस थिंग, टेक 2 plants, okay, of same health, same age, select few leaves, cover with a similar size of polythene bag equally, okay, put one plant in good sunlight condition and you put other plant in shade condition, okay. So जहां पे लाइट अच्छी है वहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, stomata will be open, more the stomata open, more will be the transpiration, okay. So you can see more water droplets when it is placed in direct sunlight as compared to the shady area, ठीक है. अगेन आप कोई भी फैक्टर ले सकते हो ट्रांसपिरेशन का, मोस्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स तो सेम रहेंगे प्लांट के, बट यू कैन चेंज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और जैसे ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रांसपिरेशन, ठीक है. ह्यूमिडिटी क्या होता है, अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो ऑलरेडी एनवायरमेंट में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, सो द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉट डेवलप्ड. जितना वेपर प्रेशर अंदर है उतना ही बाहर है, तो इवेपोरेशन होगा ही नहीं, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं. सो अगेन यू कैन परफॉर्म सच एक्सपेरिमेंट कि आपने प्लांट जो है, यू कैन ऑब्जर्व द सेम प्लांट इन रेनी डे कंडीशन, यू कैन ऑब्जर्व द प्लांट ऑन सनी डे कंडीशन, ओके. डे और नाइट की जगह आप डिफरेंट कंडीशंस में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके. सो रेनी डे में ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं आपको, ये बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है. अंदर द पॉलिथीन विल बी, देयर आर नो वाटर वेपर्स इनसाइड, इसीलिए क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट. And the same plant on a sunny day, hot sunny day, you can see numerous water vapors inside the polythene bag, okay. So ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो बच्चा घर पे आराम से कभी भी परफॉर्म कर सकता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस उसको बांधना है और ऑब्जर्व करना है, okay. You can even collect the water अगर चाहे तो, but it will not correspond to exact transpiration, but you can modify it further. So can I ask any one of you that अगर कुछ और मॉडिफिकेशन, कोई और फैक्टर देखना हो आपको ट्रांसपिरेशन पे, तो आप क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हो सिंपल एक्सपेरिमेंट को? अगर मान लीजिए, Can it be a windy day? हाँ श्योर, Wind. बट विंडी विल बी अ प्रॉब्लम है क्योंकि हम ना पॉलिथीन से पूरा कवर कर रहे हैं इसको, Okay. है ना मैम. तो अगर हमारा लीफ एक्सपोज्ड है विंड को, तो हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स मूव कर गए और ट्रांसपिरेशन बढ़ गया, पर क्योंकि हमने इसको कवर कर दिया है पूरा, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम इफेक्ट ऑफ विंड नहीं दिखा पाएंगे. Types of plants. यस बैचलर मैम, रॉय मैम. Types of plants, different types of plants. हाँ एग्जैक्टली, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, किसकी आप अलग अलग प्लांट सेलेक्ट कर लीजिए, चौड़े पत्ते वाले, पतले पत्ते वाले, जिस एक शाइनी पत्ता होगा, क्योंकि जितना ज्यादा शाइनी लीफ होगा उसके ऊपर थिक क्यूटिकल कवरिंग होगी या वैक्स की कोटिंग होगी. तो ऑलरेडी अगर किसी प्लांट में ऐसा मैकेनिज्म है, इसका मतलब उसमें ट्रांसपिरेशन कम ही हो रहा होगा. सो यू कैन परफॉर्म सेम एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट. वेरी गुड, थैंक यू मैम. ओके, और आप आप अगर छोटे पॉट लेते हैं ना, छोटे छोटे ले लो, छोटा पॉलिथीन ले लो, जो जिप बैग होते हैं छोटे वाले, वो ले लो, तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख सकते हो. एक गमला उठा के आप फ्रिज में रख दो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कोल्ड जगह पे रख दो, नॉट फ्रिज क्योंकि वहां तो फिर लाइट भी नहीं होगा, बट कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंडा कर रखा है आपने, और दूसरी जगह आपका तेज धूप है, गर्मी है, तो आप टेम्परेचर और लाइट दोनों का इफेक्ट एक साथ भी देख सकते हो उसमें. यू कैन यूज अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द 2 डिफरेंट एरियाज. तो लाइट और टेम्परेचर वैसे भी पैरेलल चलते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, राइट. So as you
जस्ट गिव एन एग्जांपल कि हम डिफरेंट स्पीसीज को कर सकते हैं, एंड आई सेड कि हाँ डिफरेंट स्पीसीज में आप डिफरेंट सरफेसेस ले सकते हैं। तो एक फैक्टर और है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर रहा है, दो इट इज एन इंटरनल फैक्टर, द सरफेस ऑफ द लीफ। नंबर ऑफ स्टोमेटा तो है ही, बट सरफेस ऑफ लीफ भी है कि अगर वो बहुत शाइनी है जैसे मैंने बोला तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग है तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा। ठीक है, तो यू कैन अगेन डिजाइन, दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट डिजाइन फॉर द सेम प्रोसेस, और इसमें आपको पूरा प्लांट की भी जरूरत नहीं है। यू कैन, और एक ही प्लांट में यू कैन टेक डिफरेंट लीफ सैंपल्स। ठीक है, आपने एक ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का लीफ ले लिया, ठीक है, एंड वन लीफ यू कीप एज कंट्रोल, no changes. On the second leaf, you can cover the upper surface with petroleum jelly. So petroleum jelly will act as a barrier for transpiration. ठीक है, वो लेयर बना देगा एपिडर्मल सेल्स के ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर, तो वाटर वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे। Then to the next leaf, you put this petroleum jelly on the lower surface of the leaf. और उसके बाद आप जो नेक्स्ट लीफ है आप दोनों सरफेस पे लगा दो, upper and lower surface. Now, if it is a mesophytic plant where more stomata are present on the lower surface, so आपको करना क्या है, पेट्रोलियम जेली लगाने से पहले आपको लीफ का वेट लेना है, और उसको एक दिन छोड़ने के बाद आपको लीफ का वेट लेना है। Okay, so transpiration, because it is loss of water and because we are taking simply leaf which is not absorbing any water further. So because of this loss of water, there will be change in the mass of the leaf. जितना पानी लॉस होगा, all of us are made up of max water. हमारी बॉडी में मैक्सिमम वाटर है। ठीक है, तो लीव्स के अंदर भी पानी बहुत ज्यादा है। जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, दे आर लूजिंग वाटर, दे विल ऑल्सो लूज देयर वेट। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग लैब में आराम से करा सकते हैं। जिसमें आपने क्या करना है, बस लीफ लेना है, वे करना है, note the initial weight. Now expose that leaf to environment, okay, and you can provide different conditions to this leaf. आपने पेट्रोलियम जेली अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, दोनों सरफेस पे लगाया, तो ऑब्वियसली जहाँ पे अगर ये एक मेसोफिटिक लीफ है जहाँ पे स्टोमेटा नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो सबसे कम ट्रांसपिरेशन आपको और वेट लॉस आपको इसमें दिखेगा। सबसे ज्यादा वेट लॉस आपको इसमें दिखेगा जहां पे आपने कोई पेट्रोलियम जेली नहीं लगाया है, क्योंकि जहां पे पेट्रोलियम जेली नहीं लगाया है वहां ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। Okay, so there will be a lot of weight loss in the first leaf. Second leaf, when you have put it on upper surface, then it will depend on कि स्टोमेटा कहाँ पर ज्यादा है। तो I am talking about a mesophytic leaf where it is hypostomatic, more stomata on the lower side. So कुछ स्टोमेटा तो ऊपर भी होंगे, तो थोड़ा सा वेट में एज कंपेयर टू दी फर्स्ट लीफ थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोअर सरफेस पे लगाते हैं तो वेट में और कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और कम होगा। हम दोनों सरफेस पे लगाते हैं तो ट्रांसपिरेशन शायद बिल्कुल ना हो, और रेट ऑफ ये वेट चेंज आपका बिल्कुल ना हो इसमें। ठीक है, so this is an experiment anybody can perform by simply weighing the leaf. Again, अगर आप लीफ को वे कर पा रहे हैं घर में किसी मेथड से, तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी हो सकता है, क्योंकि वैसलीन तो सबके घर में होता है, and you can put a layer of Vaseline on the leaf surface and observe transpiration. Okay, in fact जो हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी बताया, इसमें भी आप कुछ एक में आप लीव्स में ऐसे ही रहने दो और एक में लीव्स पे वैसलीन लगा दो। ठीक है, on either surface or both surfaces, and then you can see water vapors किस में ज्यादा बन रहे हैं, किस में कम बन रहे हैं। Okay, this is the photometer which I was talking about. Okay, photometer is an instrument to measure the rate of transpiration. Okay. And how do you measure the rate of transpiration? By this, the process which we have just talked about, that passive absorption. Transpiration होगा तो water absorb कर रहा है roots के थ्रू। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मुझे फिर चाहिए होगा, मेरा जा रहा है। You can even perform this experiment laptop by
not taking a complete plant, but एक plant twig भी अगर आप ले लो, तो थोड़ी they देर are बाद all चार्जर चाहिए affected होगा, by मेरा वाला water खराब हो रहा है ना, molecules. बैठ जाएगा एकदम से। They have हो गया? xylem in the हाँ। stem, and if you cut the stem, if you give a fresh cut to the stem, put it in water, then it can absorb water. ये तो हम बचपन से घर में करते आए हैं एक्सपेरिमेंट। हमारे को गुलाब का फूल मिला, हमने उसको पानी में डाल दिया, तो कई दिनों तक वो ठीक रहता था, बहुत दिनों तक फ्रेश रहता था, क्योंकि द स्टेम कैन एब्जॉर्ब वाटर। जब तक वो डेड नहीं हो रहा है तब तक वो इट कैन टेक इन वाटर। जब तक लीव्स रेस्पायर कर रही हैं, जितने ज्यादा पत्ते होंगे उस गुलाब के फूल में साथ में, उतना ज्यादातर वो फ्रेश रहता था। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपायर कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब भी कर रहा है वाटर साथ में। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग टू शो एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपने 2 प्लांट लिए, आपने बीकर लिया, सिंपल बीकर लिया, उसमें ट्विग डाल दिया कटा हुआ, एक में कम पत्तियां कर दी, एक में ज्यादा पत्तियां कर दी, और फिर आपने देखना है किस बीकर में पानी जल्दी कम हो रहा है। ठीक है, so that is simply a photometer. So this is a type of photometer which is used in labs. Okay, so what you do, you take a plant twig, the cut end of the plant twig is inserted in a water reservoir, in a tube containing water. The other end of the tube is connected to a glass rod, or you can say even you can use a burette, you can use any graduated pipette for this. Okay, and the rest of the end of the pipette or the glass tube is again put in a beaker containing water. Okay, but before you make a continuous column of water, what you can do, you can insert an air bubble in between. बीच में अगर एक बबल है, okay, so this bubble will not move क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है, ये horizontal है तो ये यहीं पे रहेगा. Ma'am, is this assembled or is this a You can assemble it, ma'am, by using simple burettes and thistle tube with you. okay? जो सिंपल लैब एपरेटस है, एक चौड़ी वाली ट्यूब होती है थिसल ट्यूब, जो ऊपर एक साइड से चौड़ी होती है, एक साइड से पतली होती है, तो उस पतले वाले एंड पे आप दूसरी ग्लास ट्यूब को बांध सकते हो। लेकिन ग्लास ट्यूब में आपको एक राइट एंगल बेंड चाहिए, क्योंकि पानी वो ऑब्वियसली इसी पोजीशन से ले पाएगा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल आपको रखना होगा अपना एपरेटस, ताकि बबल हॉरिजॉन्टल रहेगा तो एक पोजीशन पे ही रहेगा। आप अगर आप इसको वर्टिकल कर दोगे तो बबल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम जब ये लेट इट बी एक्सपोज टू द नॉर्मल कंडीशन, आपने लाइट में अपना एपरेटस रख दिया, ट्रांसपिरेशन विल टेक प्लेस, वाटर विल बी लॉस्ट, सो वाटर कॉलम विल बी पुल्ड अप, तो इससे यहाँ से पानी पुल अप होगा। ठीक, और ये रिजर्वायर की ऐसा आपको जरूरत नहीं है, अगर ये पूरा भी कंटिन्यूड होगा तो भी ये काम करेगा। फिर आपने क्या करना है, जब अब ये वाटर पुल होगा तो ये वाटर यहाँ से पुल होगा ट्यूब से। ठीक है, और क्योंकि ये कनेक्टेड है तो ये वाटर बीकर से पुल होगा। तो ये जो एयर बबल है दैट मूव्स इट्स पोजीशन इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, जैसे जैसे पुल होता रहेगा ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता रहेगा। So to calculate rate of transpiration, what you can do कि आपने 5 मिनट तक ऑब्जर्व किया, 5 मिनट के अंदर ये बबल कहाँ से कहाँ तक मूव कर गया। So the distance moved by the air bubble in a particular time, in a unit time, is your rate of transpiration. ठीक है, so इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये रिजर्वायर का मैं कह रही हूँ कि एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जब ट्रांसपायर होता रहेगा वाटर यूज होता रहेगा, और ये एयर बबल हो सकता है एकदम एंड पोजीशन तक आ जाए। तो एयर बबल को वापस 0 पोजीशन पे पहुंचाने के लिए यू ओपन दिस स्टॉपर, वाटर विल put pressure on it and the air bubble will come back to the original position. So that is the only role of this reservoir here. Okay, so as you said ma'am कि ये apparatus assemble करना पड़ता है या मिल जाता है, तो ये किस simple design भी है photometer का which you can assemble in your labs. इसमें कुछ भी नहीं है ना, इसमें वाटर रिजर्वायर एज सच है, ना इसमें हमें एयर बबल इंट्रोड्यूस करना है। यू जस्ट हैव अ प्लांट ट्विग, यू रिक्वायर अ रबर ट्यूब एंड यू रिक्वायर अ ग्रेजुएटेड पिपेट जिसके ऊपर मार्किंग हो। ठीक है, प्लांट ट्विग को आपने रबर ट्यूब में डाला, बट इंपॉर्टेंट थिंग है, द प्रॉब्लम और द इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से इज हियर, दिस शुड बी एयर टाइट।
रबर ट्यूब अच्छे से प्लांट ट्यूब को ढीला नहीं होना चाहिए, टाइटली फिक्स हो जाना चाहिए, so that it is airtight. For the maintaining the continuity of the water column, the pulling of water column, अगर बाहर से हवा आ रही है तो सक्शन प्रेशर नहीं जनरेट होगा, तो सक्शन प्रेशर जनरेट करने के लिए या नेगेटिव प्रेशर जनरेट करने के लिए देयर शुड बी एयर टाइट, कि अगर ये पुल हो रहा है तो ये पुल ही होता जाए, बीच में कुछ रुकावट ना आए इसमें. ओके, यू फिल दिस रबर ट्यूब with water. There should not be any air bubble in between. It should be continuously filled with water. And then the other end of the rubber tube is connected to this graduated pipette, again filled with water. So everything from graduated pipette to the rubber tube and the stem, this should be dipped in water. It should not be exposed. So there is a continuous water column here. Let your plant be exposed to the normal environmental condition. Light में जाके रख दिया इसको. It will show transpiration. Transpiration से water column will be pulled up in the xylem, and because you have given a fresh cut here, so water will be pulled up from this rubber tube. Rubber tube से pull होगा, तो graduated pipette से pull होगा, and this water level will drop. So calculate the initial water level, और 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद the final water level. So this distance traveled or the drop in the water level corresponds to your rate of transpiration. So your rate of transpiration will be decrease in the level of water, with you can say in a unit time. ठीक है, कि 5 मिनट में 1 घंटे में कितना हो रहा है ये, you can calculate it per unit time. So this is a simple photometer. ठीक है, वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स फोटोमीटर से, जिसको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, ये बहुत सिंपल है. Yes. And you can go through this paper by Dr. Kishore Pawar, that is measuring transpiration with simple low cost single leaf photometer. इसमें कुछ भी नहीं है, हालांकि लेवल के लिए आप यहाँ पर कोई नॉर्मल बॉटल की जगह आप कुछ ऐसा ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब ले सकते हो या ग्रेजुएटेड कोनिकल फ्लास्क ले सकते हो, जिसमें अगर आपको लेवल नापना हो कि कितना पानी एब्सॉर्ब हुआ है. ओके, so the method is simple, same. Take a plant twig, put it in a straw or rubber tube, insert the straw into the bottle. Okay, it should reach the water, it should be dipped into the water, and there has to be some escape of air also, कि अगर पानी absorb हो रहा है तो कहीं से हवा का धक्का लगना चाहिए उसको, तभी वो ऊपर जाएगा. So you have this other end open. Okay, so this will transpire, this will absorb water. So for demonstration purpose it is okay कि आपने दिखा दिया कि पहले वाटर बॉटल में पानी का लेवल कितना था और फिर पानी का लेवल कितना हो गया. So for demonstrating transpiration, absorption of water due to transpiration, okay, this method is okay. This is also called as suction due to transpiration. Transpiration is causing suction, it is causing absorption of the water. Okay, so can you now tell me some of the experiments which you can modify with transpiration here with using this photometer? ये तो हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन बता दिया आपको. नाउ अगर ट्रांसपिरेशन स्टडी करना है, आपको डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी करने हैं, तो आप क्या क्या मेथड डिवाइस कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं? The simple photometer can be kept in different atmospheric conditions to study the factors that is controlling the transpiration, which we have done earlier also in another way also. Right. different kinds of potted pot को लेके जा रहे थे, यहाँ पे आपको बस अपना photometer move करना है. You can move it to sunlight, you can move it to shade condition, you can move it even to the classroom. तो शो करने के लिए कि कहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, कहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम है.
And different kinds of plants also can be taken. And Yeah, you they can can use compare. different kinds of plant. Okay, but उसमें अगर आपको compare करना है दो Yes. different plant को इस method से, तो एक चीज ये होगी कि अगर आपको rate of transpiration निकालना है, so you make sure that the leaves of this plant or the other plant, वो तो दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है, तो आप दोनों का वेट सेम ले सकते हो इनिशियली, और या आप दोनों प्लांट को लेने से पहले, दोनों प्लांट ट्विक को लेने से पहले उनका वेट ले लो, ठीक है, उसके बाद आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, तो और बाद में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पर यूनिट टाइम पर ग्राम ऑफ वेट ऐसे निकाला जा सकता है। तो आपके पास कंपैरेटिव वैल्यू तभी आएगी अगर आपके बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, राइट। तो वो भी अच्छा, आप डिफरेंट प्लांट्स का भी कर सकते हो इसमें। और Ma'am, plants again, with different size of leaves can be taken. Some can have broad leaves and others can have leaves. So it can be said if the number of stomata is more, the transpiration will be more. yeah, ma'am, that can be demonstrated also. Or by applying, as you said, the petroleum jelly also, we can show the importance of stomata. बिल्कुल, you can apply the petroleum jelly on the leaf surface, on the upper leaf, lower leaf. आधे प्लांट की लीफ पे पेट्रोलियम जेली लगा दो, आधे पे मत लगाओ, तो कितना फर्क पड़ रहा है ट्रांसपिरेशन का। यू कैन इवन प्लक द लीव्स, कि आपने एक ट्विग लिया, उसका ट्रांसपिरेशन देखा, फिर आपने उसकी लीव्स आधी तोड़ दी, तो फिर ट्रांसपिरेशन बढ़ा, कम हो गया। दैट ऑल्सो यू कैन डिजाइन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स लाइक दैट ऑल्सो, क्योंकि लीव्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है ट्रांसपिरेशन। So anything else that you would like to ask me? हम और क्या क्या रोल बता सकते हैं ट्रांसपिरेशन के बच्चों को? या अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग, जैसे हम कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम ज्यादा होता है, बट दिन के टाइम कई बार आप देखना लीव्स वापस ड्रूप कर जाती हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दीज क्वेश्चंस कैन कम इन एनी चाइल्ड्स माइंड कि मैम मैं ट्रांसपिरेशन स्टडी मैं देख रहा था प्लांट्स को, तो जब दिन का टाइम था तो तब सारे के सारे पत्ते उसके मुरझा गए, शाम को फिर से रिवाइव हो गए। तो अगर दिन के टाइम पत्ते मुरझा गए, दैट मीन्स आपका rate of स्टोमेटा क्लोज हो transpiration गया। is higher than absorption. Yeah, Rate of- wonderful. So if, because transpiration is leading to absorption, but if the environmental conditions are such that the transpiration is exceeding absorption, then the leaves will droop. Okay, that means the leaves will no more remain turgid. They will become flaccid and they will droop down. Okay, so that is an important reason, and this process is also normally called as noon drop. नून ड्रॉप, कि दिन के टाइम पे लीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है प्लांट में वाटर कंजर्व करने का, कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया तो अपने आप पत्तियां जानबूझ के दे विल क्लोज देयर स्टोमेटा, देयर विल बी रिलीज ऑफ एन हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड दैट हेल्प्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और जानबूझ के पत्तियां अपने स्टोमेटा बंद कर लेंगी, वो ड्रूप हो जाएंगी ताकि ट्रांसपिरेशन खुद से कम हो जाए। अब ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके जो ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन का जो रेशियो है वो फिर से बराबर हो जाएगा, ठीक है, और प्लांट्स में फिर शाम के टाइम एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फिर उतना चाहिए ही नहीं होगा प्लांट को, तो पत्तियां फिर से रिवाइव हो जाएंगी, दे विल गेट वाटर एंड दे विल रिवाइव। So this is a mechanism in the plants to adapt themselves at higher temperature every day. हर रोज होता है ये हर plant के अंदर, and this is also, you can call this process as wilting process. Okay, तो wilting भी in fact you can say कि इस जो wilting हो रही है, इस wilting को हम कहते हैं temporary wilting, जो almost रोज हर plant में हो रही है, that is called as temporary wilting, कि ठीक है होगी और शाम तक वापस ठीक भी हो जाएंगे प्लांट, वापस रिवाइव हो जाएंगे। दिन में तो सारे मुरझाए मुरझाए लगते हैं, शाम तक फिर ठीक हो जाएंगे। एक विल्टिंग होती है परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग का मतलब ये नहीं है कि प्लांट विल्ट हो गया तो वापस रिवाइव नहीं हो पाएगा,
हो जाता है रिवाइव, पर परमानेंट विल्टिंग का मतलब है कि दिस विल्टिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द मोर ट्रांसपिरेशन, बट परमानेंट विल्टिंग इज बिकॉज ऑफ लेस वाटर अवेलेबल टू द प्लांट. कोई गमला है, आपने उसमें पानी डाल रखा है, तो ट्रांसपायर करेगा. दिन में जब ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, द विल्टिंग विल अकर, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी विल्टिंग. ठीक है, शाम को वो वापस ठीक भी हो जाएगा. अब उसी गमले में मान लो आपने अगले दिन पानी नहीं डाला, फिर दूसरे दिन पानी नहीं डाला, फिर तीसरे दिन पानी नहीं डाला, तो अब वो रोज कोशिश तो करेगा कि ट्रांसफायर करे, विल्ट करे और बचा ले अपने को एक्सेस वाटर लूज करने के लिए, लेकिन उसको वाटर मिल ही नहीं रहा है पत्तियों को वापस रिवाइव करने के लिए, क्योंकि सॉइल में वाटर की कमी है. सो व्हेन देयर इज विल्टिंग बिकॉज ऑफ less of water in the soil, okay, that is called as permanent wilting. तो क्या हम permanent wilting को revive कर सकते हैं? Can a plant revive back from permanent wilting? Yes, ma'am, by giving more water. Exactly, but इसमें एक condition है कि हम 2-3 दिन के बाद तो रिवाइव कर सकते हैं. मतलब हम चले गए कहीं बाहर घूमने, हमारे पौधों को पानी नहीं मिला, तो 4 दिन के बाद वापस आए, पानी दिया, प्लांट्स रिवाइव हो गए. लेकिन मान लो हम 1 महीने के लिए बाहर चले गए और फिर वापस आके पानी दे रहे हैं, तो विल दे गेट रिवाइव? They will die. So permanent wilting, if continued for a very long time, the plants will not revive back. Okay. So this is important to note here कि wilting भी 2 तरह की होती है, temporary wilting और permanent wilting. Okay, and if permanent wilting is continued for a very long time, that causes the death of the plant. The plant will not revive back. And any more questions from this topic? Anything, any experiment that you perform in the class and you have some questions from that, you can please go ahead with that. So if there are no more questions, then we can take a break of 10 minutes, 5-10 minutes, and then Dr. Monica call will join and she will take the second session. Right? Ma'am, tomorrow, which topic will you take? Tomorrow, I will be talking about anaerobic respiration and reproduction in plants. Okay. Is there any topic you would like me to cover up? So you can. Ma'am, actually, I was just thinking in class 8, we teach reproduction in animals and reaching the age of adolescence, like these endocrine system and reproductive system in human beings. So for that, like, we don't have any activities, nothing, how to show, like. Okay, ma'am, I being a teacher from botany, so Okay. I can cover that topic, but I may not be able to do justice with that topic. I hope you understand that. Yes, ma'am. Yes. Because I have been teaching botany since last 20 years. Okay. Right. So, but I can give you reference of some, because nowadays you can even see various comics are also available for understanding these topics. You cannot do actually practicals, you cannot do, but you can give the study materials to students to read about that. Okay, so you can, if you can give them references, some applications are also there that teach this adolescent age in a very good manner. So that would definitely help students. So I'll try to locate some and I can share that with you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you. और भी किसी टीचर का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन हो वर्कशॉप से रिलेटेड, आप लोग पूछिए. फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर मोनिका मैम आएगी. So Saurabh sir, can I take your leave then, because I have a class right now?
Yes, ma'am. Thank you so much, Dr. Romila, madam. आपने Thank you so much, and we'll meet tomorrow morning then. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. तो अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और फिर थोड़ी देर में डॉक्टर मोनिका मैम आ रही है, तो फिर वो आगे की वो क्लास को प्रोसीड करें।
वेलकम बैक टू सेकंड सेशन। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर मोनिका पॉल मैडम जुड़ रही है थोड़ी देर में, 1 से 2 मिनट। तो फिर हम लोग ये सेकंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। Thank you to Dr. Monica Coleman. Please hand over the mic and started the second session today. Thank you, Imtiazi. I would like to thank. Okay. Yeah, I would like to thank MIEF for giving me this opportunity to talk to the teachers of various schools. And I'm sure the last 1.5 days would have been interesting for you. Are you enjoying? Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope some new things are being told to you. Although we are all teachers, we know the basics of everything, but it is just that how can we improve? And as teachers, we should be always open to new methods, new teaching, strategies. So this is what we want to just emphasize here. Actually, we are all colleagues. It's just that, we are teaching at various levels. So we just will share. I know most of the things you will be knowing, but I'll just share some of the recent things, which have been added to the knowledge base and how we can involve actually students in carrying out some activities, make classroom interesting for them, and get them hooked to do science. As science teachers, it is our responsibility to make teachers aware of make students aware that science is different from others. So can you tell me why is science different from other streams? Why do you think science is different from other streams? Because it's related directly to our daily life. Yes, very good. Any other person? How
why is okay another, it can be put in another other way कि साइंस के टीचर को और टीचर से अलग क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक साइंस टीचर के अंदर जो अगर और टीचर्स में ना हो तो चलेगा पर साइंस के टीचर में ना हो तो नहीं चलेगा. Search out the reason. What was it? Search out the reason behind what Search out the reason behind everything. Very good. Anyone else? Anyone else? Scientific temper. Scientific temper, of course, yeah. Anyone And else? it should, yes, ma'am, it should be application based. Application based. Very good. Anyone else? Innovative. Wonderful. किसी सरकारी स्कूल के टीचर्स अगर हैं तो अगर वो भी इंटरेक्ट करें तो अच्छा लगेगा हमें. Government school teachers, please join in the interaction. And it should be on practical life, ma'am. It should be on practicals, like very good. Learning by doing, ma'am. Okay, as a science teacher, आपको लगता है क्या कि आप अलग हो और टीचर्स से जब आप इंटरेक्ट ही करते हो, मे बी इन स्कूल्स और एनीवेयर, यू नो, एज अ साइंस टीचर or I would say as a student of science, because we are also students of science. While we are teaching, we are also learning, we attend training sessions. When you are in any company, do you feel that you are different? And why do you, अगर आपको लगता है कि आप distinct हो औरों से, तो क्या चीजें हैं जो एक साइंस टीचर को डिस्टिंक्ट बनाती हैं? Ma'am, we try so that we can connect everything with our surrounding. So that We try to find out logic. That's what I said. And ma'am, we can connect everything with our surrounding. Like we can give it small example from the surroundings. Very so that good. Everyone can go. See, if you ask me this question, तो मैं ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि एक जो साइंस का टीचर होता है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है. ऑर्गेनाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि साइंस में कुछ भी बिना एक मेथड के नहीं होता. So for everything there is a methodology, there is a protocol. Methodology को हम protocol भी कह सकते हैं. So like for instance, अगर मेरे को एक सेक्शन काटना है या मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे देखना है कि यू नो लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस दिखाना है बच्चों को, मैं सिर्फ ये कहूंगी नहीं, मैं एक तो किसी ने आप में से किसी ने बताया था कि वी विल यू नो प्रूव इट दैट लाइट इज एसेंशियल. एक पौधे को सन में रखेंगे, एक पौधे को शेड में रखेंगे और फिर देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं. वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट, बट एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही नहीं करेंगे. वी फॉलो एन एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल. हम एक मेथडोलॉजी लिखते हैं. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, पुट 2 grams, एड 5 ml. तो हमारा एक प्रॉपर मेथड होता है और हमारा मेथड ऐसा होता है कि कोई भी उसको वैलिडेट कर सकता है. यू नो, any experiment which I design can also be validated by others. So अगर मैं ये कह रही हूँ कि 2 ml डालने से कलर चेंज होगा, तो अगर पूनम जी डालेंगी तब भी चेंज होगा, अगर प्रीति जी डालेंगी तब भी चेंज होगा, अगर रितिका जी डालेंगी तब भी चेंज होगा. तो एक मेथड है, ये कहानी नहीं है या ये कोई वो नहीं है. इट्स अ मेथडोलॉजी and anybody follows this methodology will get the same results. So I believe in a method, I believe in a protocol, I believe in the proper measurements. तो science teacher और non science teacher में ये difference आएगा कि वो एक proper method को follow करेगा, उसके known accurate measurements होंगे, वो कोई भी बात validation के बिना नहीं कहेगा, उसके बिहाइंड एक लॉजिक होगा और वो एक एक्सपेरिमेंट भी करेगा कि टू प्रूव व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीचिंग साइंस ऑल्सो. तो जब आप बच्चों को बोलते हो व्हेन यू पुट आयोडीन ऑन अ ब्रेड द कलर विल चेंज टू ब्लू ब्लैक, तो इसमें स्टार्च है, राइट?
तो बच्चे जब ब्लू ब्लैक देखते हैं तो उनको आता है कि हाँ मतलब जो मैम ने कहा वो होता है, दैट्स हैपनिंग। तो बच्चों को मजा भी आता है काफी सारे, लेकिन काफी वी लूज मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड दैट इज यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। बिकॉज साइंस के टीचर्स को जनरली ये लगता है कि यू नो वी कांट बी playful in science, we can't you know make science a fun learning activity, we can't you know relate things in the field. So in order to make science more interesting, in order to make science more engaging, in order to make science reach to every student in the class, और बहुत ऑफनली ये भी होता है कि हमको लगता है साइंस कुछ ही बच्चे पढ़ सकते हैं, तो हम खुद ही अपने बच्चों को भी बोल देते हैं तू साइंस मत ले, तुम तो कॉमर्स लो, तुम आर्ट्स लो, तुम ह्यूमैनिटीज लो, साइंस कोई भी पढ़ सकता है। यू मस्ट यू नो एनकरेज एन एवरेज, यू नो आइंस्टाइन फेल्ड, राइट? Newton was not such a you know great great student, he was a great scientist. We all study Newton's law of gravity. Einstein is like a god in science, but they were not very. Thomas Alva Edison was never a good student. He failed. So जरूरी नहीं है कि जो अच्छे नंबर ला रहा हो वही अच्छा स्टूडेंट है। ये हमसे गलती हो जाती है, हम सबसे। हमको लगता है जो हमारे सवालों के फटाफट जवाब दे देता है क्लास में और जो पेपर ठीक ठाक लिख लेता है, अच्छे नंबर लेके आ रहा है, वो अच्छा साइंस स्टूडेंट बन सकता है। नो, बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन मेनी अदर थिंग्स बिसाइड्स द यू नो दिस, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा नंबर ला पा रहा है, बट अगर उसका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, अगर वो ऑब्जर्वेशंस नोट करता है दिमाग में, अगर वो उसको इंक्विजिटिवनेस है, अगर उसमें नई चीज को जानने की जागरूकता है, इच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टूडेंट आपको लगेगा लॉस्ट जैसा, लेकिन वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वही ऑब्जर्वेशन स्किल्स की वजह से बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में। सो वी most often, all of us, including me, everybody may have been making this mistake that we have put the students in brackets. ये बच्चा साइंस कर सकता है, ये नहीं कर सकता, और ये शुरू हो जाता है स्कूल से ही। और कुछ अच्छे बच्चे जो बाद में बहुत बढ़िया साइंस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लूज करते हैं, वो छोड़ देते हैं साइंस पढ़ना, वो कहीं और चले जाते हैं, वो ह्यूमैनिटीज कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें ओवरकम करनी है व्हेन वी आर डूइंग साइंस। I just want to ask you one question. Do you think what I am saying is true or not? Is my observation right or wrong? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, audible, and you are absolutely true. Yes, ma'am. Okay. So isn't it our duty as a school teacher? Because हमारे पास तो वही आते हैं बॉटनी ऑनर्स वाले बच्चे, तो उन्होंने फिर डिसाइड ही किया होता है उन्हें बॉटनी पढ़ना है, लेकिन हम स्कूल्स में ही कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करें क्लास में। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है कि हम बच्चों को सिर्फ कुछ एक स्किल सेट के बेसिस पे ना जज करें, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। कुछ बच्चों में बड़ी अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालिटिकल स्किल्स। आपने फॉर एग्जाम्पल एक उनको मेजरमेंट ही लेने को बोल दिया ऑफ प्लांट्स, ठीक है, आपने बोला कि भाई आप बाहर जाइए लॉन में और आप जरा प्लांट्स की लेंथ मेजर करो। बहुत आसान सा है कि बच्चे मैथ्स पढ़ते ही हैं, तो वो एक धागा उठा के नीचे से ऊपर तक प्लांट को मेजर करेंगे, स्केल पे रख देंगे, वो बता देंगे प्लांट लेंथ कितनी है। बड़ा एक इजी सा
एक बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, वो खुद इन्वॉल्व होंगे, टीचर बोर्ड पे लिखेगा और वो कुछ बोलेगा, लेकिन बच्चे खुद ही कुछ कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो उन्होंने कुछ किया, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जो ये मेजरमेंट्स, अच्छा अब ABCD प्लांट में अलग अलग लेंथ है, तो वो उसे मैथमेटिकली एक लॉजिकल किसी एक मतलब एक वो एक पैटर्न इवॉल्व कर सकता है वो उसको और सब्जेक्ट से, क्योंकि टीचर्स में तो ये है कि टीचर्स डिसिप्लिन स्पेसिफिक है। कोई बंदा केमिस्ट्री पढ़ के आया है, कोई बंदा बायोलॉजी पढ़ के आया है, किसी ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, किसी ने BSc जनरल किया हुआ है, कोई ऑनर्स पढ़ के आया है, तो तब टीचर बना है। लेकिन बच्चा तो सब कुछ पढ़ रहा है ना? व्हेन ही इज इन स्कूल ही इज स्टडीइंग साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज। तो अगर कुछ बच्चे होते हैं वो ना कुछ एनालिटिकल स्किल्स इतने अच्छे होते हैं, वो ड्रॉ करते हैं इन्फ्रेंसेस कि इसमें ये है, इसमें चलो अगर मैं ऐसा पैटर्न आ रहा है क्या कि इट कैन बी पुट इन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट कैन बी पुट इन अ रेशो, क्या रेशो बन सकते हैं इनके, तो वी कॉल इट एज एनालिटिकल। दे एनालाइज द रिजल्ट्स, जो भी पैटर्न आया वो उसको एनालाइज करते हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे ही डिस्कवरीज होती हैं। लेकिन ये चीजें होती ही नहीं थी ना, हमको ऐसे पढ़ाया गया, और अब कोशिश हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे पढ़ाया जाए। तो अब हमारे पास और अपॉर्चुनिटी, हम ऐसे बच्चे जिनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है उनको भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको क्लास में अपने साथ बांध सकते हैं, है ना? तो मेरा जो कहना है कि एक साइंस टीचर, एज अ साइंस लर्नर, वी मस्ट ensure that in our classroom we maintain an equity in the classroom, right? Equity in the classroom का मतलब क्या है कि हम हर बच्चे को, जब हम क्लास में जाते हैं तो हम किसी भी बच्चे से ये ना पूछे कि तुम्हारे नंबर कितने आए थे पुरानी क्लास में, तुम्हारे नंबर कितने आए थे पिछली क्लास में। हम ऐसे करते हैं, डू वी डू दिस और नॉट? At times. Isn't it a habit of an every teacher when he enters in the class for the first time, he will ask, who's the topper in the class, who has the highest marks? Do we do this? Do you agree or you don't agree? And how many of you do it and how many of you don't do it? Can we have a At times, yes. Okay, so Soumya, Soumya doesn't do it. Very good, Soumya. Soumyanta, she doesn't do it. Okay, who doesn't do it? कौन नहीं पूछता है? अच्छा, कौन कौन पूछता है? Let's be honest. No, never. Okay, Vaishali doesn't. I don't. Very good. Okay, who does? Okay, Neeti, can you tell me why don't you ask students this? What is the reason? Anyone who doesn't ask, what does he feel? Why doesn't he ask? Ma'am, it can be a reason for humiliating a child, which is not correct. At the beginning of the session, the child might lose interest because he might be scared also. And I mean, it is not right to categorize children this way. Instead of asking them, what's their name, what do they like, and if we straight away ask this question, they will be demoralized to attend any of the classes. Absolutely. So I guess, this thing may have changed now, but when I was a student, this used to be a very common practice. See, I was never a topper in a class, never. So, but I was okay as a student. I loved science. I loved to attend classes. I never wanted to miss my classes. But at the same time, I was never a topper. मेरी handwriting बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरे को लगता है टॉपर्स की हैंडराइटिंग अच्छी होती है। मेरे को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो टीचर्स इसको भी जज करते हैं। तो टॉपर तो नहीं थी, बट जब भी नई क्लास में आती थी तो मैं बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाती थी कि अगली क्लास में बहुत अच्छा करूंगी। बट फर्स्ट टाइम क्लास में टीचर्स आते थे तो हु इज द टॉपर? सो इन आवर क्लास देयर यूज्ड टू बी वन गर्ल कॉल्ड शबनम and there used to be one boy called Rohit. So they used to be toppers. So every year
every year they would be toppers, even though और बच्चों ने भी अच्छा किया होता था उनके जितने, but पहले ही एक बायस जैसा बन जाता था. मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि और भी बच्चे थे मेरी क्लास में. एक स्टूडेंट भूपेंद्र था, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर वो कभी टॉप नहीं करता था. तो ऐसे ही, और अनुपमा थी, वो भी टॉप नहीं करती थी, बट रोहित और शबनम हमेशा टॉपर्स होते थे, बिकॉज एक नोशन जैसा बना हुआ था टीचर्स के दिमाग में कि वो अच्छे हैं, वो अच्छा लिखते थे, वो क्लास अच्छे से अटेंड करते थे, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मेरे को लगता कि उनको हैंडराइटिंग का बहुत एडवांटेज मिलता था. और वो साफ सुथरा लिखते थे. नहीं थी मतलब कुछ बच्चों की उतनी अच्छी हैंडराइटिंग, तो आई गेस उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. तो अगली क्लास में जाने से पहले जब हम सोचते थे कि हम अच्छा करेंगे, तो टीचर्स वुड ऑलरेडी बी बायस्ड दैट ABC आर टॉपर्स. सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. बट 10th में सब बराबर हो गया कि एक जैसे मार्क्स आ गए सबके, एक दो कमी आए उन लोगों के और लोगों से, तो ये हो गया कि क्लियर हो गया कि बायस प्रिवेल्स. So we should get out of that bias. And sometimes also, it happens that the economic background we come from, the kind of, for example, कुछ बच्चे हैं वो तो third generation पढ़ रहे होते हैं, especially with reference to government schools, I am telling you. Some students might be first time school attending. They might be attending school for the first time. Their previous generations might not have even seen the school. So if you compare a student who is coming from a third generation education in hierarchy and one who is the first timer, there will be a lot of difference in his aptitude तो नहीं, वो तो हम बाद में जज करेंगे. Attitude in classroom, the way he can interact. So that bias also level field to everyone in the classroom, and then judges science based ability. Science is also not that much dependent on language. Sometimes, some students are good at science, but they might not have good language skills. So that also creates a problem. So students sometimes lose interest, and because teachers do not encourage, because they have language issues, and then suddenly they feel that they are not meant to do science, which is not true. In fact, जिसका language अच्छा नहीं हो but analytical skills अच्छे हो, maths अच्छे हो, बहुत अच्छी science कर सकता है. तो ये जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अग्री और डिसअग्री? Agree, ma'am. And how many of you think that at times language becomes a reason that we think students are not good enough to do science? We are talking about science. Yes. Can I have anybody who says that, who agrees with me that most often, if the student is not able to speak properly or Hindi, English दोनों अच्छा नहीं लिख पा रहा, हम सोचते हैं साइंस ही नहीं कर पाएगा. How many of you agree? Ma'am, sometimes the child is not able to understand the question also if his language is not good, and he'll not be able to answer. Like if we talk about exams, I mean, teacher may because he won't be getting good marks also then. Yeah, that's what I'm saying. See, actually, that is what we want to, that is what new education policy also says, that we must have vernacular, local, state, क्या बोलते हैं, modern Indian languages जो भी हैं, जो regional languages हैं probably, उनमें ही हमें बात करनी चाहिए young students के साथ, ताकि हमें उनके scientific equipment के बारे में पता चले, उनके लॉजिकल थिंकिंग को गेज कर पाए दैन देयर लैंग्वेज. क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हैज हैपेंड बिकॉज वी वर कॉलोनाइज्ड फॉर वेरियस years by the British, and we adopted British education system. At higher levels of education, it's okay, but at lower levels, we should give some leverage to the students who are not good at language but can do good science.
I think maths can be a good parameter to judge whether a student can do science, because maths is logic, maths is analysis, maths is deriving inferences. So if a student is able to do good arithmetic, if a student is able to do good maths, we must encourage him to do science. This is what my take is. Some of you may differ. If anybody has any other opinion, please share with me so that I also get educated. I think it varies from child to child. Okay. Because I had one special need child in my class, and she was very good in maths. She used to score full marks in maths, but she was not able to do any other subject. Okay, that is a case She where was not there able is. to comprehend. I think, when we talk about specially abled children, their one of their facets is very evolved. It's highly evolved, and others are less evolved. Then her overall result used to suffer, because she was just good at maths. Yeah, see, the problem here is we are talking about a special case. Yes, ma'am. Because special children have this this thing that they'll be good at one thing. They'll be very good at, in fact, at one thing, maybe music, maybe maths, and maybe other things they are not easily able to comprehend. But I'm talking in general, this is my my analysis, you may say, that I've seen that students who are good at maths and who can do good, quick arithmetic can do good science. I mean, this is a statement, and I want to know from you people that whether my statement is justified or you have other opinions. For example, you shared that for specially able children, this is a very important learning, that for specially able children, it might not stand true because you have an observation to support it. Anyone else? अर्चना जी, आप कुछ कह सकती हैं? अर्चना पांडे जी, can you share your idea? Arshi Jahan ji, आप कुछ कह सकते हैं? You want to say something? I agree with you, because as the classes get higher, maths and science are related, and definitely a student who's good in maths will be able to do science also. It's the fact. Okay. Lower classes, the child might do well in science without the mathematics thing also, but definitely logic should be there. But as the 8th onwards or 9th onwards, since calculations are there and so many things are derivations are related, so a student who's good in maths will do science well. They are related. Okay. Anyone else? आरती जी, आप बता सकती हैं क्या अपना एक्सपीरियंस? आरती पवार जी, Ayushi ji, can you unmute yourself and say something here? Because I'm trying to construct some knowledge here in this classroom. Anyone else? Anju ji, would you please share your thoughts? Anju Moria ji? I think people are not interested in this. I just have another opinion. Sometimes, it depends on teacher also. Sometimes science teacher, the child likes science teacher, so he loves science, but maths teacher may be very strict or something like that, so he might not be liking. I mean, it might be like that also sometimes. Yeah, let's come to another very important point. Most often, I took a survey, right, of the students because we wanted to know why. एक point था, मैं एडमिशन करती थी हंसराज कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट में, मतलब हमारे यहाँ टर्न होता है एडमिशंस का. I was doing the admissions, and suddenly, students came in with 94%, 95%, and I was in the core admission committee, and all students had studied science till 12th, and they wanted to do English honors, and some of them wanted to do philosophy honors. Then I asked them, why don't you apply for science courses? Why are you applying for
English and all. So, then that the group of students told me, ma'am, science teachers are very strict, and they are so discipline oriented. We have come to the college. We don't want to face the same kind of situation as we used to have in our school. So the general notion which students have is science and mathematics teachers are tight-lipped. बड़े मतलब ऐसे से होते हैं, डांटते रहते हैं, ये डायग्राम ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं किया. And English teachers they are narrating a poem, they make it so interesting, they are telling you a story. वैसे ही साइंस और मैथ्स बच्चों को पहले से ही वो लगता है कि it is something where you need more logical thinking and all. And then a teacher being strict also dissuades many students not to do science. So we must try to be more friendly with the students. And also, yeah, somebody wants to say something here. Somebody wants to say something. See, मैं बहुत important बात कर रही हूँ यहाँ पे कि एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल पे how important is it for a student, for a teacher to reinvent his teaching style, to reinvent his teaching methodology in order to attract more students to science and in order to make classes more interesting, right? So another thing which is coming out of our discussion today is that the teachers need to be more friendly. Science teachers should not be that tight-lipped. हर चीज में ये जवाब मतलब वो बनाना, नहीं डायग्राम बना पाया अच्छा स्टूडेंट तो हम उसे डिस्करेज करते हैं. डायग्राम बनाना, सुंदर डायग्राम बनाना इज नॉट साइंस. The diagram has to be scientifically correct. That is important. For example, आपने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि सेल का डायग्राम बनाओ. किस क्लास में हुआ है सेल? Where do we teach cell? Class 7 and 8. Class 7 में like little bit and class 8 a little detail. Class 8 we start. Class 7 and 8. 7 and 8. Again, here I want to, for example, you are asking a student to draw a cell, right? Some student can make a beautiful cell because he has inborn artistic skills, right? And some student can make a very crude kind of a diagram. But what should a science teacher do? Should he, किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छे से शेड किया है डायग्राम, अच्छा पेंसिल यूज किया है, this is also what our teachers generally used to do. The important thing is that a scientific diagram is not an artistic drawing. Please remember it forever. A scientific diagram has to be scientifically correct. अगर हमने कहा कि न्यूक्लियस ओवल है या सर्कुलर है तो न्यूक्लियस सर्कुलर होना चाहिए. अगर हम कहते हैं ये सेल हेक्सागोनल है तो it should look like a hexagon. If we say that the cells are spherical, they should look like spherical. If we say it is 3-layered, diagram से लगना चाहिए वो 3-layered है. If we say it is thin-walled, diagram से लगना चाहिए thin-walled है. पर अगर एक बच्चे ने बहुत शेड किया और सुंदर डायग्राम बनाओ और ये नहीं पता चल रहा वो thin-walled है या thick-walled है, तो वो डायग्राम नहीं है, वो ड्राइंग है. So for science, a teacher has to make a distinction between a drawing and a diagram. I hope we are clear here. Yes, ma'am. A test tube should look like a test tube. वो funnel नहीं लगना चाहिए. But test tube कितना सुंदर दिख रहा है, it is immaterial, isn't it, for a science teacher? So हम carried away हो जाते हैं क्योंकि beauty सबको पसंद है. उसने बोला दिखे आरती ने.
So how many of you agree that we science teachers at times, not always, at times are not able to make a distinction between the diagram and a drawing? Are we asking for a drawing or are we asking for a diagram? Diagram. So how often do we do this mistake that we rate students on for the beauty of the diagram? Tell me honestly, how many of you see that उसने सेल का न्यूक्लियस का वही स्ट्रक्चर बनाया है या नहीं? उसने शेड करके उसको थिक वॉल तो नहीं बना दिया क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन थे इन्वॉल्व था. Do we pay attention to it or not? We do pay attention, ma'am, but we do see the beauty also. Yeah, okay. That's a very honest answer. Anyone else? Again. Yeah. Diagrams must be clear and presentable. Yeah. Presentable, I would say that diagram should be scientifically correct, even if it is untidy. Right, ma'am. I mean, scientifically correct से मेरा मतलब है, देखो, because मैं botany की हूँ, I'll just tell you, cortex में hexagonal cells अगर लिखा है कि इसका cortex hexagonal है, तो उसे hexagonal बनाना चाहिए. अगर हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस इज लोब्ड, तो लोब दिखना चाहिए डायग्राम में भी. अगर मैं ये कह रही हूँ कि द सेल वॉल इज थिन, तो शेड करके वो थिक बना देते हैं बच्चे. ये मैं ऑब्जर्व करती हूँ कॉलेज में, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया. तो वो उसको इतना अच्छे से पेंसिल से अंदर से शेडिंग कर देंगे. फिर मैं उनको ये समझाती हूँ कि कैसे, कहाँ से सीखा है. कहते मैम दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मैंने कहा या ऑफ कोर्स इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, but you are not making a drawing, you are making a diagram. So description of the stuff, description of the object should coincide with the diagram. That is important. I think this is a takeaway message. If we are doing it already, it's okay. I appreciate it. If we have not been doing it, let us from today onwards change this strategy and make a distinction between a diagram and a description, and try to see if the figure which the student has made coincides with the description. That's important, right? This is another takeaway message for us to, not lose students in the classroom, not, lose students because nowadays अभी मैं पढ़ रही थी, किसी ने बोला whatever is available in शायद थॉमस एल्वा एडिसन का ही कोट है, whatever I can find in a book is not required for me to remember. So which means that diagrams तो आजकल you can make diagrams with lots of other stuff. लेकिन अगर बच्चे को साइंस समझ आई है, when we go to higher classes, what happens is that if you do science and if you do research and all, you have technicians who make diagrams for you. You only think, you only design an experiment. You think what are the important things where research is needed. But अगर ऐसा कोई student है स्कूल में और उसको diagram नहीं बनाना आया, तो हमने उसको lose कर दिया. So this is what I wanted all the teachers to understand. I hope I am clear. Yes, ma'am. So this is another thing. We don't have to be very, very strict. We don't have to be very specific about the language. We have to see the diagram is scientifically correct, not artistically correct. We also have a very important thing, a duty as a science teachers in a primary level, to design some low-cost activities while we are teaching science. For every topic, we have to design a low-cost, some activity wherein students can do it themselves. Generally, आज तक हम demonstrate करते आ रहे हैं. So there is a difference between demonstration and doing it. Demonstration is the teacher does and the student watches.
राइट, वो हम करते हैं कभी कभी. आई होप आई एम क्लियर. कि हमने ले लिया एक apparatus और हमने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें दिखा दिया. जनरली स्कूल्स में यही होता है, पर हम बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करते. प्रोबेबली हम बच्चों को इसलिए नहीं इन्वॉल्व करते क्योंकि हमारे पास उतना मटेरियल नहीं होता, उतना apparatus नहीं होता. Then how do we bridge that gap? That gap can be bridged by developing our own small activities, which can be very specific to that particular school, which that can be particularly specific to that area, so that we can engage students, right? That is very important. So can yesterday I told you that I want from you some single activity which you think can make science interesting, especially with respect to water. Can any of you suggest some of the activities? Because I told you yesterday that if you can think of some interesting activities related to water. Anyone? शशि जी, आप बता सकती हैं क्या कोई इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी? छोड़िए वाटर को, छोड़ दीजिए. एनीथिंग which can help you engage the students and which students can do on their own in the classroom or in the school premises. Shashi ji? Hema ji, aap, do you want to share some idea, some thought? Parul ji? SK ji कौन है? Anyways, anybody who wants to volunteer? Ma'am, floating, sinking. Very nice. Various things. Wow. Can you explain to all of us? Ma'am, simple, like different things available can be taken. Maybe a matchstick, maybe a paper, cotton, like that. Leaf, maybe. And I mean, they can be put in water, and students can learn from their experience about which things float, which things sink. And yeah, then they can relate to the weight and area, displacement. Very nice. बहुत अच्छा एक्टिविटी है. And you can even compare कि water, एक में water डालो, एक में kerosene डालो, और difference देखो. Yes. Very nice. Very nice. A good activity for students. या एक में कोई juice डाल दो, एक में plain water डालो और देखो. And then tell students to think कि ऐसा क्यों हो रहा है, and let them come with any stupid answer. But this is a very good activity. आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है. जूस 10 रुपए का ग्लास मिल सकता है, वो हम भी अफोर्ड कर सकते हैं. या कुछ भी तेल घर से ही हम लेके जा सकते हैं. We can do this. And बाकी if we want to compare materials with water, we can also do that. Paper, stone, whatever. It is a good activity. Thank you, Rashmi ji. Solubility, ma'am, solubility. Yeah. Related experiment. Yeah, we discussed solubility yesterday, that we can compare in order to show that water is a universal solvent. We can. Anyone else? Rate of evaporation can also be shown, ma'am, by keeping water in a plate and in a glass outside, and children can observe, and that can be related to the evaporation of water, which if more water bodies are there, then the rate of evaporation is more, and it can be linked to water cycle also. जहाँ पे आपका area इस तरह का होता है, this can be done. Very nice. Very good. Even ma'am, we can show simple potted plant, like we water the potted plant and show them, and then maybe after next day they can observe that the water has evaporated from that. Yeah, this activity probably we discussed yesterday, that we can compare the different plants, उनमें हम अलग-अलग water evaporation circulation and all. बहुत अच्छा है. Anyone else? Even ma'am, we can integrate with music also.
Like Jal Tarang. Oh, wow, wow. That how water is a medium. Very good. Wonderful. एसिड बेस मैम एसिड बेस को बच्चों को बताना कैसे कि लेमन एसिडिक है, सोप बेसिक है और टर्मरिक क्या है, इस तरह की एक्सपेरिमेंट लिटमस पेपर के साथ नॉर्मल अवेलेबल हो जाता है ये, या विदाउट लिटमस पेपर भी हो जाता है मैम। ठीक है, सही है। यस, और कोई एक लो कॉस्ट इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी जो अपने अपने स्कूल्स में आप कराते हो, कैन यू शेयर? कुछ एक मतलब जो बच्चे बड़े फैसिनेट होते हो आपकी एक्सपीरियंस से, लो कॉस्ट एक्टिविटी जहां कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा हो। Okay, so I have, when we ask them to make a firki in the chapter to make them understand moving air, they are very fascinated, and with any piece of paper they are able to make it. Okay, great. उससे origami भी सीखते हैं, cognitive ये भी आते हैं skills. Yeah, nice. Anyone else? Okay, I have this assignment for you. I'm so sorry. हम एक दूसरे को असाइनमेंट भी देंगे क्योंकि मेरे को भी असाइनमेंट मिला है इस वर्कशॉप का। तो असाइनमेंट ये है कि each one of us, even I, including Romila and everybody who is involved in this workshop, we have to write one simple activity. But we don't have to copy paste from anywhere. अपना एक 7th, 6th, 7th, 8th, 9th, 8th till 8th, I guess, के syllabus में से can we propose an activity? कोई भी एक activity related to, रोमिला ने आपको respiration पढ़ाया और आज पढ़ाया नहीं, मतलब I mean share किया। आज क्या था discussion का topic? Respiration in plants, basically. Right. See, actually, I also talked about water yesterday because water is directly related to transpiration, the properties of water, etc. So now respiration, transpiration, and water is thoroughly kind of discussed. So can you, or each one of you, just one small activity which you can design related to the 3 discussions which we had. You have to submit that to us tomorrow for sure. How, ma'am? There will be an email which would be shared with you. Imtiaz ji, are you around? Yes, ma'am. Imtiaz ji, please share the email address on the chat box. Which email address? Millennium India? Yeah. Okay, just I'm sending it. And I am also sharing mine. You can CC to me. So this is my address. See, I have shared my address. I hope it's clear. It is mcall@hrc.du.ac.in. And then Saurabh, can you please share it in the proper format? MIF email. MIF 021 minutes, ma'am. Just correction. Just one. MIF, I can type it here. MIF 02. Just MIF 02. Yes. @gmail.com. @gmail. See if it is correct. I hope it is correct. Yes, it's correct. MIF02@gmail.com. So you can CC to both the emails and send it across, right? So how are we going to write this activity? First, you will write what is the aim of the activity. And most important thing about this activity is that it has to be low cost activity, which can be done in any school of India.
Because the plant, if you are using plant, the type of plant can vary. कहीं पे X plant available हो सकता है, कहीं पे Y, कहीं पे A, कहीं पे B. So those things are okay, but you have to design an activity where we do not have to buy anything from anywhere. Or even if we want to buy, it should be a reasonably priced. ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कि हमें वैसी कोई एक्टिविटी डिजाइन करनी है कि जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करना, लो कॉस्ट. So, and that so you will write the aim of the activity, you will write what are the materials required very clearly. Third is you will write a little, why do you think this activity is important? And then I told you scientific methodology should be written in points, so that if Poonam ji decides this activity here, Reema ji also can adopt in her school. So if she says, I use 2 grams of A, I should also be able to use the 2 grams and get the same results. So this is very important. Scientific method is very important. Methodology is very important. So please write the methodology in points, and that's it. It will be a 1-page, maximum 1-page activity. And most important, why do you think that you chose this activity? मतलब इस आपको क्या लगता है कि बच्चों को इससे क्या-क्या सीखने को मिलेगा? What all will students learn from this activity? That is the basis. Is that okay? Yeah. Can it be art integrated, but it may not contain the measurements? Of course. But science should be an element of this. The nature of the activity should be more scientific. You know, I will again emphasize, scientific method में बच्चे को क्या-क्या दिमाग में आना चाहिए. Scientific method का मतलब है बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम हो, एक क्वेश्चन हो कि मुझे ये देखना है ये सॉल्ट एसिड है या बेस, फॉर एग्जांपल, या आई वांट टू कंपेयर व्हिच वाटर हैज मोर पीएच. कुछ तो है ना, उसके दिमाग में क्वेश्चन है. ही इज ट्राइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन. और आई एम गोइंग टू से दैट पी प्लांट हैज मोर ट्रांसपिरेशन in comparison to a tomato plant on the same day, same conditions. A pea plant transpires more. Does a pea plant transpire more in comparison to tomato plant? ये मेरा एक question है. So, जो भी activity आप दे रहे हैं या उसमें science का element है, that first there should be some question which we are trying to answer. Second is we have to have a methodology, a method of science. Then we should be able to infer something out of it, interpret something out of it. So these elements should not be missing. Even if it is art integrated activity, it's okay. But the basic method of science, where we focus on asking a question, designing an experiment, and analyzing or drawing inferences. These are the key elements of any scientific method. Those key elements should not be missing. If we have anything else besides that, that's okay. But that key element should not be missing. We can also, make the activities participatory, right? Participatory activities, wherein, the activity can be you ask students of different classes, or you ask the students to divide them in the groups and tell them, ऐसी activity भी हो सकती है, to compare A, B, C, D. You can even design a participatory activity where the students learn the method of science. That is important. And topics are these only, na? Respiration, transpiration, water. I would not, strict to that. Okay. Because हम science पढ़ रहे हैं, तो if you think you can do something related to this, it would be wonderful. If you think you have something else which is related to 6th, 7th, 8th syllabus, then also it's okay. We don't mind. It should be scientific activity. But it should not be there already. मतलब कहीं से copy pasted नहीं होनी चाहिए. We all encourage our students not to do that. So we will also follow, because we are also the students of science. So we will also follow the same thing. And what's the deadline now? Yeah. What's the deadline? Tomorrow. Tomorrow? Your workshop will finish tomorrow.
So by tomorrow, one, you can submit it. Okay. And, your certificates are going to come from ministry. So we also are supposed to submit something to them. So we'll evaluate and see what kind of activities have been proposed. Right? So I was told that आप लोग बहुत बोर हो जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना today. So if there is anything else you want to talk or share, I'll be more than happy to discuss. इम्तियाज जी कितने बजे at what time are we winding up? आप पर डिपेंड करता है मैम, ऐसे 1 बजे तक कल काकरू सर ने बोला था कि 12:30 बजे खत्म कर देना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सेशन करके आप खत्म कर दीजिए इसको। आप एक बार काकरू सर से पूछ लीजिए। ठीक है मैम, आप क्वेश्चन सेशन कर दीजिए। अब ऐसे भी 12:40 हो गए हैं लगभग जी, तो क्वेश्चन सेशन करके फिर आज का बाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि 10 बजे बिफोर आई क्लोज आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू वन वीडियो, प्लीज वॉच दैट। ओके ओके। So I am sharing with this video with you. It's a YouTube video. So anyone, if he's not able to hear the sound, can later on also watch it whenever you have time. Ma'am, have you shared in the chat box? No, I'm sharing the video here on presenting that video. See, this is a video by Danny. He's a high school teacher. And he says, what are we doing wrong in teaching science? So in this video, he has clearly demonstrated that in school, in first few years, in primary, we enjoyed teaching science, but when we went to middle school, science became students started becoming disinterested in science. So what is it that led to the loss of interest in science, and what a science teacher should not do when he's in the classroom? So I am sharing the link of this video also with you, because its voice is not very, वैसे ही YouTube की quality अच्छी नहीं है इसकी. So most important is that he says we should not always be in instructing mode. We should always be in constructing mode. So when we are in a constructing mode, then science becomes more interesting than anything else, because we are always saying ye karo, ye karo, ye karo, and we are not involving our students in our teaching learning process. We lose science students. It is very important. इसलिए art integrated activity भी जो आपके syllabus curriculum में डाली है, the idea of putting that also in the syllabus is that let students get engaged in understanding a concept. But हम लोगों ने उस art integrated activity को क्या करा है, हम घर में assignment दे देते हैं, right? और जब वो घर के लिए assignment जाता है, वो बच्चा नहीं करता, कौन करता है? Who does that? Parents. We all do. I have also done that.
So students don't do that. 90% of them do not do that. It is done by the parents. So who is becoming more creative? Parents are becoming creative. And when we judge, whom are we judging? We are judging parents. We are not judging the students. This is another very important takeaway message, that if you are giving activities, test and allow them to do activities in the classroom. Allow them to do the activities in front of you, and you will understand who has how much of potential, right? So I want all of you, I'm sharing the YouTube link also of this video, where he is clearly saying that as long as we are in the instruction mode, we will lose many students, because not every human beings are not meant to be sheep, like a herd of a sheep. एक बोलते ना भेड़ चाल, एक निकल गया तो सब उसको फॉलो करते हैं. Human beings are meant to be involved. We enjoy when we are a part of any process. आप देखो, अगर आप कोई अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे होते हो, आपको बड़ा मजा आता है. लेकिन अगर आप नहीं हो उस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशनल टीम के पार्ट, आप उतना नहीं एंजॉय कर पाते, आप उतना दे भी नहीं पाते. यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट ऑल्सो देन. So it is a human mind, it is human psychology which does not allow him to be like a sheep. भेड़ चाल नहीं करनी उसे प्रोसेस का पार्ट बनना है. और अभी तक हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसी रही कि हम इंस्ट्रक्टिव मोड में रहे और स्टूडेंट्स रिसेप्टिव मोड में रहे. अब हमें उनको they have to be a part of the entire process. They have to be integrated. We have to have integrated classroom where teacher is taking a role of an instructor at times, and he is helping construct that knowledge in the classroom. So this is one important takeaway message from me. I want all of you to watch this video whenever you have time, you are traveling in a car or all. So please watch this video. What a science teacher should not do is the theme. मैं link भी share कर रही हूँ, आप अपने पास link रखिएगा. So is there any question which you want to? Any questions? Do we have any questions? Ma'am, kindly share the link of the video. I have shared in the chat box. I've shared in the chat box. Yeah, here it is. We have not got. Oh, sorry. Click नहीं किया. Yes. So are there any further questions? No, ma'am. So if there are no more questions, I will leave you with these thoughts. You can watch this video when you have time, and please submit your activities. We will be looking forward to see the activities. You can write in any language you want to. If people are comfortable in Hindi, they can write their activities in Hindi. If no, ma'am, our brain is so you can construct something interesting. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Thank you, Dr. Monica ma'am, और जितने भी आज टीचर जुड़े हुए थे सभी को thanks. I hope you all enjoyed, and I tried to do something because books में जो है you already know that. So I thought today I'll just try to build up some ideas which we can use while we go back to our classrooms. Thank you. Thank you, everyone. Okay. All the best to all of you, and see you tomorrow. Tomorrow we'll be concluding. Yes. So it'll be very nice to have you all, very bright young teachers within us. Bye. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much to all of you. Tomorrow we will meet at 10 a.m. Okay. Thank you.